Action. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to the chairperson of the day who introduced me with all zeal and enthusiasm. At the same time, I would like to express my heartfelt gratitude to dear Professor Muhammad Atik, the director of UGC MMTTC of Amaravati University. It is really an example to show that the universities can collaborate with colleges and universities can really execute the concept of NEP 2020 in the sense of the document and the spirit. Because NEP 2020 says that colleges and universities, they should collaborate with each other for the development of colleges and universities. And here we are seeing a real example where this university, Amaravati, is collaborating with a prestigious college like yours. I would like to greet all the participants or the academic minds, scholars that you have chosen to have discussion on NEP 2020. There are many important ideas related to NEP 2020. Basically, NEP 2020, the document talks about completing those ideas, reaching those goals by 2035. So 2035 is the year by which these objectives of NEP 2020 are to be accomplished. I'll not take much time on the objectives of NEP 2020. I'll straight take you to discussion on Indian knowledge system, because I have one session of 1.5 hours, and in that I have to justify Indian knowledge system. Though it's difficult to talk about Indian knowledge system, the composite one, in this much time, but we can talk about anything just in 1 minute also, in 1 hour also, and for many days also. So we'll try to talk about this system here. Indian knowledge system, it encompasses the vast body of knowledge that has evolved over millennia in Bharatvarsha. Kitla parcha beta? This system integrates, this system integrates diverse fields such as philosophy, science, art, medicine, and spirituality. They all are reflecting the holistic and interdisciplinary nature of ancient Indian thought. The term Sanatan, it denotes the eternal and timeless essence of this knowledge, passed through generations, continually enriching Indian culture and intellectual traditions. The significance of Indian knowledge system lies in its comprehensive approach to understanding life and the universe. Unlike many contemporary systems that compartmentalize knowledge into distinct disciplines, Indian knowledge system interweaves various domains presenting a unified vision of reality. This integrative perspective is evident in texts such as Veda and Upanishad, where philosophical inquiry, scientific observation, and spiritual insights, they coexist, and they coexist seamlessly. Understanding Indian knowledge system is crucial for comprehending the depth and richness of Indian culture and heritage.
the Indian knowledge system is not just an academic construct, but a living tradition that has profoundly shaped social, cultural, and spiritual fabric of Indian society. The Veda, comprising of Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharva Veda, are among the oldest sacred texts in the world. These texts provide insights into the early Indian worldview, encompassing cosmology, rituals, ethics, and social organization. The Rig Veda, for instance, contains ruchas that address various deities and natural forces, reflecting a profound reverence for the natural world. This reverence is not just a religious sentiment, but a cultural ethos that has influenced environmental conservation practices in India. The Upanishads, a collection of philosophical texts, delve into profound metaphysical questions about the nature of reality, the self, and the universe. Concepts such as Brahma, the ultimate reality, and Atma, the individual soul, are central to Indian philosophical thought and have influenced various aspects of Indian culture, including art, literature, spirituality. For example, the principles of unity in diversity, derived from the idea of oneness of all existence, is a central aspect of Indian cultural identity. Ancient Indian sciences, particularly in the field of astronomy, mathematics, and medicine, have made significant contributions to global knowledge. Aryabhatiya introduced the concept of zero and discussed the Earth's rotation, while Sushrut Samhita laid the foundations of surgery. These scientific advancements are not isolated achievements, but are embedded in the broader cultural context, reflecting the Indian tradition of holistic inquiry and innovation. Ayurveda, the ancient Indian system of medicine, emphasizes the balance between the body, mind, and spirit. The holistic approach to health and well-being is not only a medical practice, but also cultural heritage that informs daily life, dietary habits, and wellness practices in India. For instance, the use of natural herbs and dietary regulations in Ayurveda is mirrored in Indian culinary traditions, highlighting the integration of health and lifestyle. The practice of yoga and meditation, rooted in ancient Indian spirituality, have gained global recognition for their benefits to physical, mental, and spiritual health. The Yoga Sutra of Patanjali, a key text on yoga, outline the eightfold path that includes physical postures, ethical precepts, breath control, and meditation. These practices are integral to Indian culture and are celebrated in various forms, from daily routine to international yoga festival. The Indian knowledge system is testament to profound intellectual and cultural achievements of ancient India. By integrating diverse fields of knowledge, Indian knowledge system offers a holistic perspective essential to understand the rich embroidery of Indian culture and heritage. Appreciating this system not only honors India's past, but also provides valuable insights for addressing contemporary challenges holistically and integratively. With this understanding and background about Indian knowledge system, now we will try to
Please mute yourself. I guess somebody has unmuted them. Mr. Ganesh ji, आपका fine. It is muted. Thank you. So now, after this introduction, I would like to share a very, very impressive video on Indian knowledge system. This video is very interesting in a way. It is prepared by Ministry of Education. It is prepared by the department called Indian Knowledge System of Ministry of Education. Now, this department, as you all are aware, is responsible for the exploration and immersion, orientation and sensitization of Indian knowledge system among the scholars. So here, we'll try to have a look at Indian knowledge system in a bright, colorful, most stories are about lost civilizations. This is about a living one. Of years, mankind took birth and life for granted, going through the motions of survival. But somewhere, profound insights regarding the nature of our existence dawned upon an ancient people, the people of India. As civilizational wisdom expanded, learning itself became a sophisticated tradition for the Hindus. Continuous knowledge transmissions meant that the most sublime heights of civilizational development were achieved and refined by successive generations. But slowly, the times changed. Not just for India, but for the world. Today we find ourselves tangled in the web of environmental disasters, pandemics, and rapidly changing technology. If we do not intervene, perhaps future generations will inherit a different earth. I embark on a mission to search for the answers to these questions. This journey takes me to the heartland of the world's oldest living civilization. The rolling hills,
and lush green fields of southern India that hold countless civilizational secrets. A meeting of great significance is about to take place in Thanjavur, the cultural seat of the great Chola Empire. In the giant shadow of Brihadeshwar, I am joined by Professor Mahadevan from IIM Bangalore. Professor Mahadevan has devoted his life to exploring the vast canvas of Indian knowledge systems. As you see, Indian knowledge system has three words there: Indian, knowledge and system. So each one of them has some meaning. Therefore, Indian essentially means the Akhanda Bharat, which means somewhere from Afghanistan up to, I would say, Burma and even beyond that. So that's the Indian part of it. Knowledge is both formal and informal, or literary and non-literary, if you want it that way. So we are sitting in a very beautiful temple complex here. Yes, so this temple is about 1,000 years old. There's a whole gamut of know-how or knowledge which is required to putting up this structure, which should remain also intact for 1,000 years. You need to know how to put the structure, layout and planning, what kind of logistics. There's so much of granite being used. There isn't granite around. So we don't know how they brought so much of volumes of granite here. So in modern terms, logistics and supply chain management, if I have to call it, applied things like mathematics, astronomy, town planning and architecture, metalworking have been wonderful. There is a culmination of a number of ideas that the know-how which went behind all these, we can call it as system. So that way we can call it as Indian knowledge system, which is in practice, which is in use. Gopala Gokula Vallabhi Priya Gopa Gosuta Vallabham Charanaravinda Aham Bhaje Bhajaniya Suramuni சிற்ப சாஸ்திரத்துல தசதாள பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. உத்தம தசதாளம், மத்தியம தசதாளம், அதம தசதாளம். அந்த தாள பிரமாணங்கள்ல தான் நான் அளவுகளை நியமிச்சு முகம் இவ்வளவு, கழுத்து இவ்வளவு, மார்பு இவ்வளவு, நெஞ்சு இவ்வளவுங்கிறத ஒரு பிரதானமாக சிற்பக்கலையில் அதை சொல்லி தான் நான் அமைக்கிறோம். அந்த பிரதான மூல ஆதாரமான அந்த தசதாள பிரமாணத்தில் முழுமையாக அளவு பிரமாணத்தோடு அமைஞ்ச ஒரு சிற்பம் தான் சோழர்கால சிற்பக்கலை. அதனால தான் மற்ற சிற்பத்தை விட சோழர்கால சிற்பம் அளவுலையும் அழகுலையும் மிக நேர்த்தியாக இருக்கிறதால தான் இந்த உலக அளவில் சோழர்கால சிற்பக்கலை இந்த அளவுக்கு உலக புகழ் பெற்றது. Of River Neela, nested within nature's bosom, is Kerala Ayurveda Samajam. Established in 1902 by the Zamorian of Calicut, the Samajam continues to preserve the ancient Indian knowledge system of Ayurveda in its pristine form. Campus you have, it's in the middle of the nature. So how many types of, herbs you must be having here? Maybe 1,000, more than 1,000.
tell us about, the great tradition of Natya Shastra. Natya Shastra is not only a text for dance or music, it is a text for Shilpa, Kavya, Chitra, and many other kind of art forms. Without the element of dance, the knowledge of sculptor is incomplete. Without the element of the music, the knowledge of dance is incomplete. So all the art forms is closely attached to each other. In the Agama Vidhis, the Nritya Gita is also a part. So our ancestors, our rulers, kings gave importance to dance and music in the temple. So there was a beautiful, you can say, combination of, art, literature, divinity, spirituality, dharma. Art is a form of worship, and also worshipping through the art is itself offering to the God. Oh, that's beautiful. Very well said, The art is worship, and worship is art. Oh, wow. Samananam kaja kutila sundar tilaka brura kamayanka samananam apaharana tulasi dasa trasa vihara vrinda kananam gopala gokula vallavi priya gopa gosuda vallavam charanaravinda aham bhaje bhajaniya sura muni durlabam gopal 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 The more I become aware of the knowledge systems of India, I get convinced that all these paramparas are unified by a common thread. The entire culture is drenched in reverence for the sacred. But this uniqueness is most vivid in India's scientific traditions. To get a taste of it, I had to get in Nalakuda, the seat of Kerala School of Mathematics, to the home of Madhav, its founder. When you add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. up to infinity, then it's some Greek mathematicians said it is infinite, but it was Madhava who said it is not infinite, it is a finite n into n plus 1 by 2. We attribute this to Gauss theorem, 200 years after Madhava's time. So he discovered trigonometric series, inverse trigonometric series. Now Britannica has renamed it Madhava Grigori series, Madhava Newton Raphson series, like that. But this is the ancestral temple of Madhava's family. This you see the two granites. These are the two granites where one granite stone was used by Madhava to meditate, and the other stone for lying down and see the planets in the sky, full night. Then they constructed the whole orbit of the planets. 2 centuries before Copernicus, 3 centuries before Newton. Why the discussion of Indian knowledge system cannot be complete without referring to Indian astronomy? Indian knowledge system has a very deep antiquity, which means it is accumulative in nature. It also has many layers. And if you want to understand the layers, then you must have a time step. Astronomy is time. India was the prosperous place in the world. Why? Because of a sophisticated astronomy, because of sophisticated understanding of the monsoon, sophisticated development of agriculture. So all the basic ingredients that you need for civilization were here for thousands of years.
In Surya Siddhanta, the latitude measurements of all our current nakshatra system goes back to 8000 BC. That is a great work of Dr. Anil Narayanan of ISRO. But why 8000 BC? Because that is when the inclination obliquity was the highest. And that time, Kashi, Varanasi acted exactly like what Ujjain did. And Thailand, there is actually evidence. European team found a panchang that is about 1600 years old. That is first created based on the Kashi as a starting point, and then within India, in Tamil Nadu, it is adjusted by 3 degrees because that place is 3 degree longitude difference from Kashi. Now that panchang is used in Thailand by the king of Thailand and whatnot by making appropriate correction. What do you call that? Conversion of longitude into time. Correct. As we travel. Correct. In the eastern or western direction. Right. A recurring theme is clearly evident. In Indian astronomy, stars are named after seers. Madhav's mathematics flourished in a temple. Ramanujan's equations came from his Devi. It seems, for Indians, science was not contradictory to religion. For us, science was just a defined form of religion, and religion was nothing but refined science. How did India's knowledge survive while other ancient civilizations disappeared? This unique longevity baffles me. Understanding it holds the key to ensuring that today's civilizational knowledge survives too. My curiosity takes me to Chinmaya Foundation in Kerala, where I meet Gauri Mahulikar, a Vedanta researcher and former head of the Department of Sanskrit at Mumbai University. विद्या रक्षिता संस्कृति सर्वदा. विद्या जो है फॉरएवर इट प्रोटेक्ट्स द कल्चर. प्रकृति से संस्कृति बनाना, दिस इज द टास्क फॉर ह्यूमन बीइंग. एंड हाउ ही कैन अचीव इट? फ्रॉम विद्या. और ये जो विद्याएं हैं, अष्टादश विद्या स्थानानि कहते हैं, दे आर ऑल इन संस्कृत लैंग्वेज. So 4 Vedas, 6 Vedangas, 4 Upangas and 4 Upavedas, it becomes 18. Ashtadasha Vidyaha Etaha. And therefore I say, Vina Sanskritam Naiva Sanskritihi. इंडिया को जानना है, इंडियन कल्चर जानना है, तो संस्कृत जाननी होगी. Inspired by Gauri's profound insights, I proceed to catch a glimpse of ancient India. The place is Mattur, a village in Karnataka which continues to speak and practice Sanskrit as its official language even today. Protected from globalization, Mattur is a pristine agrahar, a scholarly village which was established 600 years ago by the great king Krishna Dev Rai. आचार्य जी, यहाँ की क्या विशेषता है इस ग्राम की? यहाँ वेद और शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत अवकाश मिलता है. ये तो परंपरा से ही हमारे गांव में है. संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन, वेद का अध्ययन और अध्यापन. यहाँ गांव में 6 आहिताग्नि अग्निहोत्री हैं और 40 यजुर्वेद का पंडित हैं. और तुंगा जी ही हमारा गांव का विशेष है, क्योंकि ये तो जीव नदी है. Just a few hours from Mattur is the unmissable Sringeri, an ancient seat of learning founded by Adi Guru Shankaracharya more than a millennia ago. Sringeri continues to preserve and protect India's Sanskrit traditions. Script development took a long time in our civilization because we are primarily an oral tradition. So when scribes came along, so people who are knowledgeable, they usually dictate and scribes take it down. So this is a palm leaf. Palm leaf, and it's written with some kind of ink here. Usually a brass tool, it's inscribed. How wonderful. You can see the inscription, but you can't read it. We apply a kind of a powdered soot on it so that it starts appearing. The average age of a palm leaf manuscript is about 500 years. Once the manuscript
becomes old, when it becomes fragile, so another copy is made. To ensure perfect transmission of knowledge across millennia seems like an impossible task. For perspective, today's advanced digital technology can become extinct if a solar flare hits Earth today. Papers and manuscripts are not safe from calamities. The only thing which would survive the last mile would be a living knowledge retained in the hearts and minds, a rigorous oral method to preserve knowledge without errors. The idea is profound, but then why only Sanskrit? What's so special about it that Sanskrit succeeded in protecting the Indian knowledge system for such a long time? When nobody even thought of, the words could have a science, we have an entire system of Vyakarana, Panini's grammar, where he, very distinctly states which varna, which consonant emerges from which part of the mouth cavity. It is the only language in the world which is like, as you write, so you spell, and as you spell, so do you write. The phoneme and the morpheme hardly differ. Okay? But in English, PUT put and BUT but. Why it is not but? I mean, there are hundreds of such examples. So Sanskrit is the only language, perhaps, which is very, very pure in that manner. If I recite a Vedic mantra today, for all you know, this is how it was recited 5,000 years back. So why I'm saying this is the uniqueness of transmission. And this transmission has happened by and large, through the Guru Shishya Parampara. So basically the whole idea, as you rightly said, is moment you say oral, then obviously the medium of transmission is human beings. Therefore, there is this guru who is mastered, and then there was a mechanism of creating a large number of, sishyas. If you talk of this Stapatya, the architect who designs this temple, he will be a guru, he will have a sishya. A metalsmith who does some complex metal working will have a guru, he will have a sishya. So this is how we orchestrated the whole thing. It was not just about the Vedas. Every science, every engineering, every technology that we practiced, it was all through a system of Gurukula. A guru could transmit it to 100 odd people. So the 100 odd people, out of that maybe some 20, 30 odd will actually become a guru. So now one can imagine how this knowledge is going to go. It will be a divergent cone. That was how we were actually propagating it and passing it from generation to generation without any loss. This ecosystem of value-based transmission of knowledge is perhaps the most unique jewel of Indian knowledge systems. The Guru Shishya Parampara. For millennia, people from all over the world stormed to India to be a part of this parampara. Right from homely gurukulas to mighty international universities, I sense the presence of an extremely nuanced system that focused on practical learning. What is our ancient Indian education system as such? Acharyat padamadatte, padam shishyah svamedhaya, padam sabrahmacharibhyah, padam kalakramenacha. When the acharya, that is the teacher, comes to the class and teaches, he teaches you only 1/4 of the whole of knowledge. 1/4, shishyah svamedhaya, his own self-study. The third pada is sabrahmacharibhyah, from the fellow students. We call it peer learning nowadays. And the fourth is what we call today experiential learning. That is kalakramenacha. Time has to pass by. You have to ripen with the time. When you walk with the Guru, you talk with the Guru, you eat with the Guru, and play with the Guru. You learn without the Guru teaching you explicitly. That was a profound concept of Gurukul, the home of the Guru. No need for value education classes as today.
when the entire system is value-oriented. This genius interweaving of Sanskriti, Sanskrit and Guru Shishya Parampara is the reason behind India being the only continuous living civilization. I am beyond words. While I feel a serene sense of contentment, I am also concerned if the world is ready for such profound restructuring. I cannot help but wonder how India's knowledge systems are relevant to solving today's global challenges. Why do you think, the exploration, of the Indian knowledge system is very necessary in the modern context? See, the next 100 years is going to be a knowledge society. It's not about military power. It's all about who has the knowledge. And one of the important principles in strategy is what is called path dependence. The path that you walk is a function of the path that you have already walked. So for a society, for a culture, you need to know the path. The whole world is talking about sustainability. Now, if you look at the Sanskrit word dharma, the very meaning of dharma is that which can behold or sustain. But scriptures have lots of ideas on sustainable living, sustainable ways of maintaining large-scale systems, sustainability as an important concept, and so on. हमारा चश्मा बदलना पड़ेगा. Our perspective, we are very biased. We take pride in learning foreign languages. All European languages also are derived from Sanskrit. Why can't we learn that? And another thing which is very, very special about our ancient Indian education system is they address the entire humanity as the children of immortality. Shrunuvantu Vishwe Amritasya Putraha. Vasudhaiva Kutumbakam. The entire world as one family. That is the lesson of ancient education system. With time, instead of just consumption, we have to learn to give back, to return to the simplicity of life. That's what Indian knowledge systems have to offer us. The rapture of being human, the joy of constant learning, the pleasure of sharing. Coming times will test us, yet the ancients continue to watch quietly from the shadows, holding solutions to our problems. If only we are humble enough to look back with an open mind. So this was something which was really remarkable and really very interesting to understand based on Indian knowledge system, the documentary prepared by Ministry of Government of India, and it really elaborates the Indian knowledge system in very impressive way. Now, my dear professors, I would like to take few minutes from you. I would like to ask you what you understand about Indian knowledge system based on this documentary. Anybody can raise a hand like this, and then I'll speak out your name and you can speak, or you can unmute yourself and you can talk to me. Any participant? What you understand about Indian knowledge system based on this documentary? Who will start with?
No hands raised, nobody unmuted. That is so. I request you to reflect on IKS video. Anyone? We have around 40 participants. So nobody has a reflection. Everybody should have a reflection. No responses from anybody. I would suggest, you have seen the video, what appealed you in the video, what you liked in the video, what impressed you in the video. Anyone? Am I audible? I guess, yeah, I am audible. So no responses from anyone? Fine. Okay. Hello. Yeah, please. Sir, it is a multidisciplinary approach. Yes, ma'am. True. Very true. By seeing this video, I only understand that our Indian knowledge system is a variations of each and every part of our Indian culture. May I know who is this speaking? Ma'am, your name, please. I am Dr. Swati Tiwari. Okay, ma'am, please. Yeah, thank you. Thank you for your input, ma'am. Really, it's true that Indian knowledge system is multidisciplinary. It talks about various topics and ideas. There are various things which are covered in Indian knowledge system. Great, good observation. Thank you. Thank you, Professor Swati Tiwari ji. I would appreciate if I'll get one or two more responses. Not getting any other responses. Fine. Then I'll continue my discussion. So now we will discuss about Vedic literature. The Vedas are the most ancient and revered texts in Indian literature, forming the basis of Indian spiritual and philosophical thought. There are 4 Vedas, each serving a unique purpose and offering insights into various aspects of life and the universe. Rig Veda. The Rig Veda, as we know, is a collection of 1028 ruchas dedicated to, these are dedicated to various deities such as Agni, Indra, and Soma. It is primarily concerned with cosmology, philosophy, and ruchas that seek to understand the nature of cosmos and the divine. The ruchas are composed in early Vedic Sanskrit and reflect a deep reverence for nature and the elements. Known as the Veda of melodies, the Sham Veda consists primarily of ruchas derived from the Rig Veda, but set to musical notation. These ruchas were intended to be sung during rituals and sacrifices. The musical aspect of the Sam Veda highlights the importance of sound and melody in spiritual practices, which is a foundation of the rich tradition of Indian classical music. The Yajur Veda. A Yajur Veda is divided into 2 main sections, the white Yajur Veda and black Yajur Veda. It consists of prose mantra used in ritualistic sacrifices. Unlike the Rig Veda and Sam Veda, Yajur Veda provides detailed instructions
for performing these rituals, making it practical guide for priests and purohits conducting yagna and sacrifices. Atharva Veda. The Atharva Veda is a collection of spells, charms, and incantations addressed and addressing everyday concerns such as health, protection, and prosperity. It is more diverse in content than the other Vedas and includes material related to medicine, sorcery, and dairy rituals. The Atharva Veda reflects a more practical and accessible aspect of Vedic literature, focusing on the immediate needs and concerns of the people. The Veda have profoundly influenced Indian culture, shaping rituals, traditions, and societal norms. These societal norms, they continue even today. Vedic rituals, especially those described in Yajur Veda, have laid the foundation for Hindu rituals performed today. These include performing yagnas, that is, sacrificial rituals, to please the deities, seek blessings, and maintain cosmic order. The intricate details provided in the Yajur Veda have ensured the continuity and consistency of these rituals over millennia. The Veda have also given rise to various cultural traditions and festivals. For instance, the Rigvedic Ruchas celebrating Indra's victory over Vritra are reflected in the annual celebrations of Diwali, which symbolizes the triumph of light over darkness. Similarly, the chanting of Vedic Ruchas during weddings and naming ceremonies and often life cycle events showcases the enduring influence of Vedic tradition. The Vedas, particularly the Rig Veda, outline a vision of society based on the principles of dharma, that is duty, and rata, that is cosmic order. These texts emphasize the importance of maintaining social harmony and fulfilling one's rituals and duties towards family, community, and the divine. Now, when here Veda talks about the duties, it talks about the duties towards community and divine also. It doesn't talk about the selfishness. It talks about that you have duties towards divine. The concept of Varna, first mentioned in the Rig Veda, has played a significant role in structuring Indian society. Though its interpretations and applications have evolved over time, the philosophical inquiries in the Veda have laid the groundwork for various schools of Indian philosophy. Concepts such as ultimate reality and the individual soul, that is Brahma and Atma, further elaborated in the Upanishads, have their roots in Vedic Ruchas. These ideals have shaped not only religious beliefs, but also ethical and moral frameworks within Indian culture. The Veda are not merely ancient texts, but living documents that continue to shape India's spiritual, cultural, and social fabric. These ruchas, rituals, and philosophies have influenced every aspect of life, making them integral to understanding Indian heritage and cultural identity. Now, when we have discussed this much about Veda, let us have a look at a very impressive illustration and understanding about Veda. Let us try to say to it. We'll go to another very interesting video on Veda. As it talks about the overview of four Veda, you can see that this is the overview of the four Veda. Now, we'll have a look at brief history of Veda.
hardest thing is to get started. You have to get it on paper. Veda Bhumi, the land of knowledge, that is one of the names of India, and for a very good reason. If we turn the hidden pages of the history, long before the Islamic invasions and the European colonization, India has been one of the very few civilizations which has a very advanced education system of that times. I'm not saying this. If we turn back the pages of the history before 1000 AD, that's before Mughal invasions and the European colonization began, travelers from Europe, Persia to China used to travel to India to obtain the knowledge as part of this Vedic culture. If you read the books written by Megasthenes, Al-Biruni or Hyun-Sang, you'll get to know how advanced Indian education system at that times was. The knowledge of ancient India. It is one of the most comprehensive and complex education systems in the world. In this short video, we try to compile how the ancient Indian education system looked like. The heritage of the ancient Indian education and value system as we know today has been largely preserved by the inscriptions on the temples, manuscripts, and verbally transmitted from a teacher to a student. These are the three main sources from which we have been preserving the Vedic education system till today. Now let's see what they are. For ease of understanding, we have put it this way. There are 6 broad categories of Indian scriptures which hold the entire knowledge system. They are Shruti, Smriti, Purana, Itihasam, Agamam, Siddhantam. And they cover a diverse set of fields of education like mathematics, physics, biology, philosophy, astronomy, health sciences, linguistics, and many other branches of science and technology besides the theological concepts. Starting with the first one, Shruti. Shruti is well known as the Vedas, and there are 4 of them: Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, and Atharvana Veda. Rig means praise, a form of expressing the gratitude. It explains about the various hymns praising the elements of nature and cosmos. And the second one is Yajur Veda. Yajur means worship. It explains about different procedures of worship of the nature and cosmos. And the third one is Samaveda. Sama means song. It gives a music-driven canonical format to the other Vedas for ease of recitation. The fourth one is Atharvana Veda. Atharva means stable mind. It sets the rules for a steady state daily life activities that needs to be observed in a Vedic culture. All these 4 Vedas are not just like any other 4 ordinary books. You will not understand a word of it unless you are blessed with a guru who can explain to you what each of these mean, and they are highly interconnected with each other. Further down, if we look into any of these 4 Vedas, it has 4 fundamental blocks: Aranyaka, Brahmana, Samhita, Upanishad, supported by 6 external blocks: Siksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Jyotisha, and Kalpa. We'll keep it very simple, not going into further details. The 4 internal blocks of Aranyaka, Brahmana, Samhita, and Upanishads, they describe the theosophical, philosophical, and physiological anatomy of the cosmos and the nature and the fundamentals of human existence. In simple words, it describes Brahman, which means the ultimate and the supreme power of the existence. And the 6 external blocks, Siksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Jyotisha, and Kalpa, these are called as Vedangas. They complement the knowledge framework of Vedas with different and intricate specializations each. As you see here, Siksha is study of phonetics, Vyakarana is study of grammar, Chandas is study of linguistic rhythm and prosody, Nirukta is study of etymology, Jyotisha is study of astronomy, and Kalpa is study of rituals. All these 6 are called as Vedangas. And that's how the 4 Vedas are supported by the 6 Vedangas. And that is not all. Each of the 4 Vedas have 4 Upavedas as an offspring. Ayurveda, the study of life sciences, ascribing to Rig Veda; Gandharva Veda, study of music, art and dance, ascribing to Samaveda; Dhanur Veda, study of archery and warfare, ascribing to Yajur Veda; and Ardhashastra, study of business administration and political sciences, ascribing to Atharvana Veda. Now this is the complete picture of what we call today in simple words as Vedas. And one of our prime objectives of this channel, Project Shivoham, is to bring forward this entire knowledge system in a simple format that everybody can understand. We already did a couple of documentaries on Dhanurvedam, Ayurvedam, Sanskrit, and a lot more. And you can find them on our channel.
यार 5 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी थी, चार्ट से ऑर्डर पर गया ही था कि कैंडल बुझ गई। रुक, ये बंद कर और इसे खोल। धन चार्ट पर स्कैल्पर, एक स्पेशल विंडो जहाँ ऑर्डर सीधा चार्ट पर खुले। क्विक इन क्विक आउट। थैंक्स सर। थैंक्स मत बोल, सही खिड़की खोल। धन पे स्कैल्पर, क्विक। And the next one is Smriti. Smriti is authored by the sages and saints who mastered Shruti, which is the Vedas, and brought in their experiences and revelations. It is much like a thesis that the sages on different branches of studies like theology, philosophy, science, etc. It completely subserves or ascribes to Shruti, which is the final authority. And there are 18 such Smritis written by different rishis. And they are Atri, Vishnu, Harita, Aushanasi, Angirasa, Yama, Apastambha, Samavarta, Katyayana, Brihaspati, Parashara, Vyasa, Shankha, Likita, Daksha, Gautama, Shatatapa, and Vasistha Smriti. And the next one is Puranam. In very simple words, Puranam is nothing but a historical document. Often Puranam is mistaken as a mythology, but the fact of the matter is it's a historical document that has a 10-dimensional feature. And the 10 are, the first one is Sarga, history of creation of cosmos. Second one is Visarga, history of creation of the worlds. Third, Vrupti, history of evolution of the life. Fourth, Raksha, history of sustenance of life. Fifth, Amtarani, history of the time scale and how the time used to be measured in the past. Sixth, Vamsa. Seventh, Vamshanusharita. Both explain about the history of the lineage and the history of the dynasties that ruled Bharat since times immemorial. Eighth, Samstha, history of the catastrophes, all the natural calamities that have occurred in the past. Ninth, Hetu, history of the prime causes of those catastrophes. And the last one is Apasarayaha, history of the Supreme Being or the different incarnations of God. And there are 18 such Puranas, all written by just one Rishi, Sri Vedavyasa. And the 18 are Markandeya Purana, Matsya Purana, Bhagavata, Bhavishya, Brahmanda, Brahma, Brahmavaivarta, Vishnu, Varaha, Vamana, Vayu, Agni, Narada, Padma, Linga, Garuda, Kurma, and Skanda Puranas. The amount of knowledge in these Puranas is just incredible. For instance, Agni Puranam explains about different varieties of martial arts. We did a short documentary on Dhanurvedam, extracting details from Agni Puranam and Dhanurveda Samhita. You can check out on our channel. The next one in line is Itihasa. Itihasa, the word spells as Itihasa, which means this is how it happened. Of all the scriptures, Itihasas are the one which shaped up the ethos of India as we know today. And there are only two Itihasas, Sri Ramayanam and Mahabharatam. These two scriptures are of the highest order which defined, directed and drived the human values in India since thousands of years. And Bhagavad Gita, which is the epitome of all the sacred scriptures, is an integral part of the grand epic of Mahabharatam. I'm gonna get a Prototype. The hardest thing is to get started. It's the ideas and the choice of which ones to flush out that I think. And the next one is Agamas. Agamas are treatises on theology, epistemology, and also describes the architectural principles of temple construction. Basically, they are the rule books of how a temple needs to be constructed and the rituals in the temple needs to be organized. All the magnificent grandeur of the Indian temples and the exquisite carvings that we have on the Indian temples. The source code of all the beauty is from Agamas. For instance, Shilpa Shastra, the branch of knowledge which deals with sculpting, is from Agamas. And there are 77 Shakti Agamas, 28 Shiva Agamas, and 108 Vishnu Agamas. So wide and so deep. And the last one we have Siddhantam. Siddhantam means principles, a set of principles in different fields of science and technology. These are the most interesting part of the scriptures. For instance, in astronomy itself we have 18 Siddhantas which talks about different details about planetary motions, geometrical principles, trigonometry, calculus, a lot more. In this category, we have a huge set of scriptures that are in the fields of science and technology. To name a few, Sushruta Samhita by Rishi Sushruta on surgery and medicine, Aryabhattiyam by Aryabhatta on astrophysics and astronomy, Ardhashastra by Chanakya on commerce and business administration, Panchasiddhanta by Varahamihira on treatise of astronomy, Rasendra Mangalam by Nagarjuna on the science of alchemy, and the list goes on and on.
And that is a very brief history about the Vedas and the other scriptures of ancient Indian education system. For ease of understanding, we tried to condense a lot, but it is so wide, deep, and complex all at the same time. And the backbone for this entire education system is Sanskritam. And if we don't have the competence of Sanskritam, all this knowledge system is good for nothing. Let me give you one example and you will understand it. Here is a slokam from Aryabhattiya, written by Aryabhatta. Yes, the same man whom we celebrate that he invented zero. In this slokam, he gave two scenarios. The first scenario is two bodies moving in opposite directions, and the second scenario is two bodies moving in same direction. He says that time elapsed for R and B to pass through or otherwise is equal to the distance by sum of their speeds. And in the other scenario, it is distance by difference of the speeds. In simple words, he gave the equation of speed is equal to distance by time. This equation of speed is equal to distance by time is the foundation for kinematics, a branch of physics, which is the heart and soul of everything that moves in this world. This equation is the foundation in the engineering of be it a car or a space shuttle. This equation is a revolutionary discovery. But if we don't know how to read Sanskritam, all this is good for nothing. According to the documented history, Galileo Galilei in the year 1638, he published a book called Two New Sciences. In this book, he first gave the formula of speed is equal to distance by time. Now don't start judging Galileo. All his work is original, and if you read this book, you'll get to know. He did not get inspired from Aryabhatta. But the fact of the matter is, something that was discovered by Aryabhatta in 510 CE had to be rediscovered by Galileo in the year 1638. In these 1000 years, the speed is equal to distance by time equation, which is written in Sanskritam, is locked up in Aryabhattiya. 1000 years. Imagine what could have been the impact if this was known earlier to the whole world. All we know about Aryabhatta is he invented zero, but he has left us a wealth of information. Well, how many such equations and other scientific concepts are hidden in the Indian scriptures, which are written in Sanskritam, waiting to be decoded? Well, I'm not saying that all the great things in this world were invented or discovered by Indians, but all the great things that were done by Indians are not known to the world. And that's why we started Project Shivoham, to bring forward all these kinds of stories. And as always, thanks for watching. So, my dear professors, this was a very elaborative and interesting video on Veda. We have discussed few ideas about Veda. Now, again, it's a time for reflection. What you learn out of this from this video about Veda? Anybody? What you learn about Veda from this video? Anybody? Anything? It's for reflection. It's time for you to reflect on actually what you understand about Veda. Yes, sir. Good afternoon, sir. Rupa Gupta ji, please. Yes, sir. Sir, in this video, the writer or the commentator has explained the importance of Veda, the principles, the ethics and the values, and the various profounders like Veda Vyas, Agam, Nigam, Shastras. So they have explained. Thank you. Thank you, Dr. Gupta, for your attentive ears and eyes. Thank you. Thank you very much for your response. Any other participant on Veda? What do you understand about Veda out of this? So as we know, Veda is a culmination of knowledge. The Vedas are not merely ancient texts, but living documents that continue to shape India's spiritual, cultural, and social fabric. The ruchas, the hymns, rituals, and philosophies have influenced every aspect of life. That is what Veda is. Now, it's a time to understand the next part, and that is Upanishad. The Upanishads are also known as Vedanta. They are a collection of philosophical texts that explore the fundamental questions of existence, reality, and the nature of the self. Composed between
800 BCE and 500 BCE, the Upanishads are considered the culmination of Vedic thought, offering profound insights that have shaped Indian philosophy. The concept of Brahma is central to Upanishads. Brahma is described as the ultimate unchanging reality, the source of all that exists. It is infinite, eternal, and beyond human comprehension. The Chandogya Upanishad states, Sarvam Khalvidam Brahmam. All this is indeed Brahma, emphasizing the unity of all existence. Atma. Atma refers to individual soul or self. The Upanishads teach that Atma is identical to Brahma, a realization encapsulated in Mahakavya, Tata Tattvamasi, from the Chandogya Upanishad. This identification of the self with the universal consciousness forms the basis of Advaita, non-dual philosophy. Maya. Maya is the illusion or ignorance that veils the true nature of reality, learning individuals to perceive and leading individuals to perceive the world as a separate and distinct. The concept of Maya explains the apparent multiplicity in the world and challenges in realizing the unity of Atma and Brahma. Karma, the law of karma, which states that every action has consequences, is another key concept. The Upanishads teach that one's actions, that is karma, determine one's future experiences, including rebirths. This principle underscores the moral and ethical dimensions of life. Moksha. Moksha is the liberation from the cycle of birth and rebirth. Sansar. It is achieved through self-realization and recognition of the unity of Atma and Brahma. The Upanishads described moksha as a state of eternal bliss and freedom from suffering. The philosophical concepts articulated in Upanishads have had a profound impact on Indian thought and have influenced various aspects of culture, religion, and spirituality. The Upanishads have given rise to several schools of Indian philosophy, collectively known as darshans. The Advaita Vedanta school, founded by Sri Adi Shankaracharya, is directly based on Upanishadic teachings, advocating non-dualism and identity of Atma and Brahma. Other schools such as Vasishtadvaita and Dvaita also draw heavily from Upanishadic ideas while offering different interpretations of the relationship between the self and the divine. The emphasis on meditation, self-inquiry, and pursuit of knowledge, that is Jnana Yagna, is the Upanishads has shaped various spiritual practices. The practice of yoga, particularly Raj Yoga and Gnana Yoga, finds its philosophical foundation in Upanishadic teachings. This practice aims to quiet the mind, transcend the ego, and realize the true nature of the self. The concept of karma and dharma, articulated in the Upanishads, have profoundly influenced the Indian ethical and moral thought. The Bhagavad Gita, which synthesizes Upanishadic philosophy, emphasizes the importance of performing one's duties without attachment to the results and principles that guides ethical conduct. The philosophical ideas of Upanishad have entered Indian culture, influencing literature, art, and music. Works like the Ramayana and Mahabharata epic narratives also incorporate Upanishadic themes such as quest for self-knowledge and importance of righteous action. Classical Indian music and dance forms often draws on Upanishadic themes to explore and express spiritual truth. The Upanishads have also had a significant impact beyond India. Western philosophers and writers such as Arthur Schaffner, Aldous Huxley, and Ralph Waldo Emerson
have drawn inspiration from Upanishadic thought. Schaffner refers to Upanishads as the most profitable and elevating reading which is possible in the world, highlighting their universal appeal and profound philosophical insights. The Upanishads present the zenith of Vedic thought, offering profound philosophical insights that have shaped Indian philosophy, religion, and culture. The teachings on the nature of reality and self and the ultimate truth continue to inspire and guide individuals in their spiritual and philosophical pursuit. The ancient Indian sciences and their cultural relevance. Let us try to understand the achievements in astronomy, mathematics, and medicine. Ancient India made significant contribution to various scientific fields. These contributions are in astronomy, mathematics, and medicine. These achievements not only advanced the scientific knowledge, but also had a profound impact on cultural practices and daily life. Ancient Indian astronomers made remarkable strides in understanding celestial phenomena. Aryabhatta, one of the most renowned astronomers, wrote the Aryabhatiya in 499 CE. This work introduced the concept of Earth's rotation on its axis, the calculation of the solar year's length, and the heliocentric model of the solar system. Aryabhatta's precise calculations of positions and motions of celestial bodies had a profound influence on both Indian and Islamic astronomy. Ancient Indian mathematicians developed fundamental concepts that have had a lasting impact on the field. The concept of zero and decimal system and significant advancements in algebra and trigonometry originated in India. For instance, the mathematician Brahmagupta wrote Brahmagupta Brahmasputa Siddhanta, which introduced the rule of arithmetic operations involving zero and negative numbers. The work of Bhaskara II, particularly his treatise Siddhanta Shiromani, made significant contributions to calculus, number theory, and algebra. Medicine. Ancient Indian medicine known as Ayurveda is one of the oldest medical systems in the world. The foundational texts of Ayurveda include Charak Samhita and the Sushrut Samhita. Charak Samhita, attributed to the Rishi Charaka, focuses on internal medicine and provides detailed descriptions of various diseases, treatments, and the principles of Ayurveda. The Sushrut Samhita, attributed to Rishi Sushruta, is renowned for its existence and extensive coverage of surgical techniques, including cataract surgery, plastic surgery, and the use of medicinal herbs. The scientific achievements of ancient India have profoundly influenced cultural practices and daily life, reflecting a deep integration of science and tradition, that is parampara. The precise astronomical calculations of ancient Indian astronomers are reflected in the timings of various rituals and festivals. For instance, the Hindu festival of Diwali is celebrated based on lunar cycles, while Makar Sankranti marks the transition of the sun into zodiac sign of Capricorn, signifying the arrival of longer days. The mathematical concepts developed in ancient India have practical applications in various fields. The construction of temples and architectural marvel, such as Brihadeshwara Temple in Tamil Nadu, demonstrates the application of advanced geometry and engineering principles. The Sulabh Sutra, ancient text on geometry, provides guidelines for constructing altars and other religious structures with precise measurements. Ayurveda's holistic approach to health and wellness has influenced Indian dietary habits, lifestyle practices, and healthcare. The use of natural herb yoga and meditation as prescribed in Ayurvedic texts continues to be a significant part of Indian daily life. For example, the practice of consuming turmeric milk, haldi doodh, for its anti-inflammatory properties
and performing yoga for physical and mental well-being are deeply rooted in Ayurvedic principles. The integration of scientific knowledge into cultural practices has ensured the continuity and resilience of these traditions. The blending of astronomy with religious rituals, the application of mathematics in art and architecture, and the use of Ayurveda in daily life have created a rich tapestry of cultural practices that have endured through the ages. Ancient Indian scientist texts have also shaped traditional education system. The study of subjects such as mathematics, astronomy, and medicine was an integral part of curriculum in ancient Indian universities like Nalanda and Takshashila. This holistic approach to education, which emphasized both scientific and philosophical knowledge, has influenced modern educational practices in India. The scientific achievements of ancient India are not isolated historical milestones, but integral components of the broader cultural and intellectual heritage. By advancing knowledge in astronomy, mathematics, and medicine, ancient Indian scientists have significantly influenced cultural practices, daily life, and educational traditions, demonstrating the profound interplay between science and culture in Indian society. So this is something which is very important to understand about Indian culture and tradition. By advancing knowledge in astronomy, mathematics, and medicine, ancient Indian scientists have significantly influenced cultural practices, daily life, and educational traditions, demonstrating the profoundly interplay between science and culture in Indian society. We'll have a quick look at the next very important idea, and that is Ayurveda and traditional medicines. Ayurveda, meaning the science of life, is one of the world's oldest holistic healing systems, originated in India over 3,000 years ago. It is based on the belief that health and wellness depend on delicate balance between the mind, body, and spirit. The principles and practices of Ayurveda are documented in ancient texts such as Charak Samhita, Shushruta Samhita, and Ashtanga Hridaya. Central to Ayurvedic philosophy is the concept of dosha, which are the three fundamental bodily humors that govern philosophical and psychological functions. The three dosha are Vata, Pitta, and Kapha. Each individual has a unique combination of this dosha, which determines their constitution and health tendencies. Ayurveda diagnosis involves assessing the balance of dosha through various methods, including pulse diagnosis, nadi parikshan, observation, and patient history. Treatment aims to restore balance through a combination of dietary changes, herbal medicines, lifestyle modifications, and therapeutic procedures. Panchakarma, a series of detoxifying treatments, is one of the well-known Ayurvedic practice designed to cleanse the body of toxins. Ayurveda places significant emphasis on diet and nutrition, advocating for food as medicine. It prescribes dietary guidelines based on an individual's dosha, seasonal change, and principle of sattvic food. For example, individuals with a dominant Vata dosha are advised to consume warm, moist, and grounding food, while those with Pitta constitution are recommended to eat cooling and hydrating food. Ayurvedic practitioners use a Vata array of herbs and medicinal plants to treat various ailments. Commonly used herbs include ashwagandha for stress and vitality, turmeric for anti-inflammatory properties, and trifala as a blend of three fruits used for digestive health. Ayurveda is not merely a system of medicine, but the way of life that is deeply embedded in Indian culture and daily practices. Its integration into various aspects of life underscores its cultural and health significance. Ayurveda advocates for daily routine, dincharya,
that promotes balance and health. These routines include practices such as oil pulling for oral health, self-massage with herbal oils to improve circulation, and specific dietary habits to maintain doshic balance. These practices are widely followed in Indian households, reflecting the cultural integration of Ayurvedic principles. Ayurveda also prescribes seasonal regimes, Ritucharya, to align the body's rhythm with the changing seasons. For example, during the hot summer months, individuals are advised to consume cooling foods like cucumber and coconut water to balance the Pitta dosha. These seasonal practices help individuals adapt to environmental changes, promoting overall health and well-being. Many Indian festivals and rituals incorporate Ayurvedic principles. For instance, during the festival of Diwali, it is common to consume Ayurvedic sweets made with ingredients like sesame seeds and jaggery, which are believed to provide warmth and nourishment during the onset of winter. Similarly, during the monsoon season, practices such as consuming medicated ghee, clarified butter, are followed to boost immunity. Yoga and Ayurveda are often practiced together as complementary disciplines. While Ayurveda provides the framework for balanced lifestyle and diet, yoga offers physical postures and breathing techniques to enhance physical and mental health. The synergy between yoga and Ayurveda is a testament to the holistic approach of Indian wellness traditions. Ayurveda continues to influence modern healthcare in India and globally. Ayurvedic clinics and wellness centers offer treatments that attract people seeking natural and holistic healing methods. The integration of Ayurvedic principles into modern healthcare practices, such as stress management and preventive health, highlights its enduring relevance. Ayurveda is a comprehensive system of traditional medicine that emphasizes the balance between mind, body, and spirit. Its principles and practices are deeply integrated into Indian culture, influencing daily routines, seasonal regimes, festivals, and modern healthcare. By promoting a holistic approach to health and well-being, Ayurveda offers valuable insights and practices that continue to benefit individuals in contemporary society. So this is what I thought to discuss today about Indian knowledge system. It's a time for your reflection, feedback, questions, queries. It's your time. So if anybody has any question, any query, anything to ask, anything to add to whatever I've said, it's open to all of you. It's your time, my dear participants. Thank you, sir. Thank you so much for such a comprehensive session towards this IKS. Participants, the forum is open for discussion. If you have any queries or the question, you can directly ask to Professor Joshi, sir. Sir, one specific query I have received through the YouTube channel, if you could permit, can we take, sir? Please. Sir, in the name of IKS, we are always promoting the Vedas. The participant and it will be becoming the criticized point rather than another things are n number of things are there because the knowledge in the time of Lord Buddhas and Lord Buddhas and another ancient knowledge is there, but rather than we are always promoting the Vedas. So what is your view with regards to particular that, sir? See, whenever we talk about Indian knowledge starts with Veda. So whosoever will talk about Indian knowledge system, they will start with Veda. Ultimately, if discussion retains time, then Buddha is something which is not something which is not included. Yeah, Buddha is also included. Buddha is also part of Indian knowledge system, and he is very much part of Indian knowledge system. But if you look at the Siddhanta which he talks about, they are somewhere here and there are also derived from some thoughts related to Veda and Upanishad. So Veda and Upanishad, they are looked at the culmination of Indian knowledge. Whenever you talk about Indian knowledge system, it starts with Veda because they are the oldest text, oldest sacred text. I don't mind talking about Buddha also. But when you talk about the constitution of knowledge system of India, it must start with Veda and Vedanga.
That is why people discuss about Veda and Vedanga more. Thank you, sir. Yes, participants, is there any another queries? Another queries or the questions or specific observations? You can note down here, or whatever may be the practices that you have adopted at your institutions towards the implementation of this IKS. That is also much important. Anyone? If no queries or the no question, then you can confirm. So we can conclude the session. Sir, I think we should conclude if you could permit, sir. Thank you. Thank you very much. Once again, I am thankful to UGC MMTTC of this SGBA University. And I'm thankful to all dear participants for patient listening. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful session. Towards you have elaborated this concept of IKS from the inception and how it should be integrated, and our and our great country, and how it should be integrated towards the contribution of our great society and achieve the agenda of our Vikasit Bharat. So we are really thankful to you, sir, for your precious time and thought-provoking session here. And with the kind consent of Professor Joshi, sir, I would like to declare that this particular session will be over here. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Hello, Professor Atik, sir. Yes, yes, sir. Sir, good afternoon. Shall we start, Very sir, good if you could Yeah, permit? yeah, please, please. So, friends, good afternoon once again. As I have already told you that the today's session have been split into the two different parts. And now we are going to conduct for the another session. First session we have almost completed, and now we are moving towards the another session. That is the publication ethics, principle and guidelines, and the peer-reviewed integrity, with the help of one renowned and scholarly and the senior expert, Professor Mohammad Atiq, sir. Sir, first of all, I extend my warm welcome to you on behalf of all the learned participants. Friends, Professor Atiq, sir, is a distinguished academician and the researcher, currently serving as a senior professor and the head at the Department of Computer Science and Engineering at Sant Gadge Baba Amravati University. He is also the director of this Malvi Mission Teacher Training Center, and under whose able guidance we are running these courses in a very efficient manner. Professor Atik sir has hold a PhD degree in computer science and engineering along with the ME and the BE in the same field. Additionally, he was completed his MBA in the HR, Human Resource Development, and the LLBs. His area of expertise include the artificial intelligence, soft computing, and the medical image processing. Over a 3.5 decades of teaching experience and the research experience, including the 12 plus years as a professor, Professor Atik sir has mentored 15 PhD research scholar, and 3 scholars are still under ongoing his supervision, and the 2 MPhil scholars. His research contribution includes the 70 plus publications, and with the 48 Scopus indexed papers across the international and the national journal and the conferences. He is also an innovator and hold 3 granted patents and 7 published patents in the Indian Patent Journal, along with the 5 copyrights. Additionally, he has authored the 2 different books that has been published by the Lambert Germany and the ASEAN New Delhi. Professor Atik sir has played a very key crucial role in the academic and the research development, and have executed the executed a project 1.20 crore of the student access that has been funded by the University Grants Commission. He is the NBA and the NAC assessor and the trainer, and has been actively involved in the curriculum designing at the Sant Gadge Baba Amravati University as a as a chairman of the board of studies and the academic council member. He has delivered more than the 200 lectures and chaired multiple international and the national conferences, and participated in the 52 weeks of training program. He is also the fellow of this and the life member of the several prestigious professional bodies that include the IETE, IE, ISTE, CSI, IJCNN at USA.
His academic influence extends beyond of national borders. Having attended the international conference in the Greece, Professor Atiq sir has continues to contribute significantly to the field of computer science engineering, fostering research and the innovation in the emerging technologies. Friends, this is a brief introduction with regards to Professor Atiq sir. Under his able guidance, we are learning this program, that is the Malvi Mission Teacher Training Program across the country. And till right now, we have crossed the faculty members. And we have crossed the 10,000 numbers to train the faculty members from across country through the different programs. So we are luckily fortunate to get enlightened from such a scholarly and the senior person who is the eminent scholar in this field of computer science and engineering. So without taking too much time, I, sir, once again extend my warm welcome to and request you to please start with the session. Sir, please. Thank you very much, Ankit, for a detailed introduction. Actually, it is not needed anyway. Thank you once again. And I hope I'm loud and clear and all of you can hear me. Any one of you just confirm? Yes, sir. Good Thank you. afternoon. Yes, sir. Very good afternoon. Very good afternoon to one and all present here. And the coordinator and all, right, Gupta madam. I hope the sessions are going well. What has happened as far as this session is concerned, actually it was not a planned session, but what has happened on 11th hour, one of the resource person has got some other assignment, official assignment, and that is why I am here. But anyway, I will not disappoint you. You will enjoy this session as well, right? So there are basically 8 thematic areas of NEP 2020. And as you are well aware that this policy has been rolled out in July 2020, and we have crossed almost 5.5 years, right? So there are, as far as this program is concerned, there are 8 thematic areas. So research and development is one of them. So with regard to R&D, in today's session, we will just try to understand various, you can say, the issues with regard to the research and development, and what are the expectation of the government and other agencies from all of us as a academic fraternity. So having said this, just allow me to share my presentation. I hope my slides are visible to you. Anyone of you just confirm? Ji, sir. And probably we are in presentation mode, right? So this is what we are going to look at probably in the next 90 minutes. Okay, publication ethics. Okay, and the principle and guidelines and some important aspect, let's say, if time permits, with regard to the peer review integrity. Right. So having said this, there are 2 important components of this particular talk. The very first one is the ethical consideration, and the second important aspect is the integrity. So before I proceed, okay, I would love to hear from you. That is, what is your perception about integrity and so on? What do you feel? What integrity is all about? Say, I'm comfortable with Hindi, English, or even Marathi is not a problem for me, right? Because born and brought up in Maharashtra, and I would love to share with you one important aspect. That is, I belong to the same city. That is, actually, I am a native of Akola itself, right? So my schooling, everything is in Akola, and I used to reside very nearby, around 500 meters from the college you are from. That is RDG, College of you can say Arts, Commerce, and Science, right? So this say as far as these policies are concerned, right? NEP 20 and all. So it is the approach is altogether different. That is, we have to have some sort of brainstorming, you know. So it should not be a one-way kind of a thing, because we are all teachers. We know research, what is research and what is research and development and all, right? So if we can contribute, if you can contribute actively in this session, I'll be happy. Okay. Otherwise, there's no issue. Okay, it will be a monologue, right? I will go on delivering, and later on I will take your questions.
But I would love to hear from you. What do you feel? What is integrity is all about? क्या लगता है आपको? Integrity क्या होता है? What do you feel? Any one of you would like to attempt this? मेरे ख्याल से आप लोग सब जी बोलिए. Yes, integrity is basically honesty or sticking to one's own principle. Great. May I know, sir, who is speaking? Yeah, my name is Khalid Al Fatih. Oh, great. So, as Professor Khalid has rightly pointed out, it is the quality of being honest. Okay, it is the quality of being honest and having strong moral principle that you refuse to change. So many times while discharging your duty as a teacher or as an academician, okay, many times you have some confrontation with your higher ups and so on. Okay, so there are certain areas wherein none of us would like to compromise, right? That is what is integrity is all about. And when we are talking about academic integrity, it is nothing but the academic activity you are doing. Okay, so how honest you are while performing all those duties, that is what is a broader picture of academic integrity, right? And the another important aspect is the ethical considerations, right? So we'll dig upon these two dimensions in greater detail in this particular session. As far as the flow of the session is concerned, this is what is there on the agenda. We will start with, you can say, the changing role of a teacher. As while introducing, Ankit has pointed out that I spent around 3.5 decades in this particular area. I started my career way back in 1990 as a lecturer in Government College of Engineering, Amravati, right? So I'll be sharing all those experiences once again with you, right? So what is the changing role of a teacher? That we'll just dig upon, okay? Then what is the overview of academic integrity? What is the need of academic integrity? What is authorship and order? Then what are the various compromises we make while doing research? Okay, and at the end, if time permits, we will have some discussion on one of the very hot topic in this area, what they call it as the conflict of interest. Okay, and probably we'll conclude our session with various organizations working in this domain. Okay, that is, these are all non-profit voluntary organizations. Okay, those who are actively dealing with publication ethics and so on. So we'll just try to have a cursory look at all those aspects, right? And let's say if time permits, we may have something on the peer review process. Okay, wherein we will discuss what are the various models. Okay, what are the expectations from the reviewers and so on, and what is the role of AI in peer review, right? Now, having said this, let me start my deliberation with one important aspect, right? That aspect is what they call it as the changing role of a teacher, right? So we are all teachers, okay, and you know our primary duty is to teach, right, or is to carry out some academic activity, right? So teaching is of prime concern for all of us. But what has happened? I very well remember when I joined way back in 1990. Okay, the criteria was plain B BTech in computer science. Okay, that was the, you can say, the essential, necessary, and sufficient condition for becoming a lecturer. So I started my career without any B.Ed, D.Ed, and all, right? Plain B BTech from government engineering itself, and next day onwards, I started delivering lectures in the undergrad courses, right? So those days were a little bit different, okay, wherein the primary job was to teach. Okay, but what has happened due to the World Bank funding and loans from various, you can say, international funding agencies, the government has, you can say, pumped a lot of money into this edtech sector. And when this has happened, okay, we have been asked as a nation to adopt what is there in the developed countries. Okay, so in developed nation, they don't have this kind of a setup, okay, what we have in our country, right? Wherein we have, you can say, right to education, right, as a fundamental right, right? But if you look at you can say, the global scenario, things are a little bit different, right? And and that's why what has happened, that apart from teaching, the government has started expecting more from the teachers. And what are those expectations? Those expectations are in terms of research and development. Okay, but the things do not stop there. There are few more things which are expected. That is generating revenue. Okay,
or carrying out some consultancy, or and so on, right? So the dimensions are changing. Okay, dimensions are changing. Definitely teaching is there, but apart from teaching, you have to have these many things. And why these things are, you can say these things have been mandated by UGC or AICT is, the reason is pretty simple. That is, the government want that the institution must become self-sustainable, right? Self-sustainable. If you look at, and that is not, which is, you can say, which is something very irrational kind of expectation from the government front. In our country itself, we do have institutions like, say, Institute of National Importance, like IIT, ISCs, and NITs. Okay, they are having this model in place. Okay, wherein the professors are generating a lot of money, right, for the you can say the sustainability of the institution and so on, right? So, having said this, the research has been included as one of the primary. Now, if somebody asks you what is your role and responsibility, okay, you cannot say that my job is only teaching. Okay, it is teaching and research. So teaching and research, they go hand in hand. Okay, and that is why we need to take up this issue a little bit more seriously as an academician, right? Having said this, we need to know that is while going for research or writing articles for you can say research and development. Okay, again, there are a lot of things which we commit as an academician. Okay, and there are many reasons to it, because if you look at the reasons why one has to write, is the list. This is an indicative list. Okay, so this is an indicative list wherein I have jotted down certain expectations, rather certain aspects, that is when we are supposed to write. So we are supposed to write for very many things, like, say, conveying our information, maybe expressing our thoughts, or completing an assignment, or maybe publishing our work. Okay, that is the thematic area of our discussion as far as this session is concerned. Or many times we have to approach to funding agency for fetching grants, for carrying out research. For that purpose, again, one has to write. Okay, those who are from arts and literature, okay, they want to become famous in their domain. Okay, that's why they are supposed to write. Okay, many times we write for organizing our thoughts, or remembering our thoughts, or maintaining historical records, and so on and so forth. Right. Now, having said this, but if you look at the curricula, okay, before NEP 2020, now NEP 2020 is providing certain provisions for all these activities. But if you look a little bit before 2025, oh sorry, before 2020, that is before the inception of this NEP 2020, okay, you will find that we were not having anything on those fronts in the curricula. Okay, and that's why the reason we commit mistake while it comes to particularly research writing or writing research articles and so on. Okay, now this is one aspect. Okay, the another important aspect is, what is the need? Okay, as I said, somewhere we have defined integrity and academic integrity and so on, right? What is the need of this academic integrity? Okay, so as far as the need is concerned, if you look at, I have jotted down some 5. Sir, sorry to interrupt you, sir. Sorry, yes. Sir, if it is possible, could you go for the bilingual Hindi and English? Okay, If it is all right, possible, sir. all right, no problem. कोई हरकत, कोई मसला नहीं। मुझे क्या लगा कि जोशी सर भी पूरी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ओके, so that's why I started in English. But yes, participant, whether you want me to go for Hindi as well as English, okay, if it is so, then I will change my approach, right, for delivering this session. तो हम जो बात कर रहे थे कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई अचानक हमें, क्यों ये लगने लगा कि भाई ये जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है, ये हमारे करिकुलम में होना चाहिए, या ये हमसे अपेक्षित है, राइट? तो मैंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ 5 केसेस जॉट डाउन की है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, तो द वेरी फर्स्ट केस विच वाज वेरी पॉपुलर, दैट इज द स्पीच मेड बाय मेलानिया ट्रम्प वर्सेस मिशेल ओबामा। ठीक है ना? तो ये हुआ था 2016 में, और आप लोगों में से शायद बहुत लोग जानते भी होंगे कि इट वाज ब्लोन अप लाइक एनीथिंग, है ना? और इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, वेयर इन अगेन देखिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कि ये जो केसेस हम ले रहे हैं, यहाँ हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि भाई वेदर मेलानिया ट्रम्प या और एनी XYZ
whether he or she was really accused of plagiarism and so on. हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि भाई ये सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों गेन हुआ है, राइट? दैट इज द ओनली, व्हाट इज द नीड, ओके, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड, राइट? तो जैसे आप मेरी स्लाइड्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एवरीवेयर यू विल फाइंड द सोर्स एट द बॉटम, राइट? So this is the stuff, as a matter of fact, I have taken from this powerleaks.com, wherein 5 cases इंटरनेशनल लेवल पे साइट की गई। तो दूसरा केस होता है हैरी पॉटर का, एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बाय जेके रॉलिंग वर्सेस एड्रियन जैकब। तो इसमें भी अगर आप देखें तो एड्रियन जैकब, शी स्टोल मेनी ऑफ हर आइडियाज फॉर हैरी पॉटर, दैट वाज द केस, ओके। अगेन हम इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे या इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझना। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स सीरीज बाय जे.आर. टॉकिंस बाय रिचर्ड वैगनर, यहाँ पे भी आप देखें तो wherein the J.K. Rowling is has been accused of plagiarism and so on, right? Then there are 2 more cases which are very popular, जिस पे लोगों ने काफी रिसर्च भी किया है, particularly Da Vinci Code written by Dan Brown। ये एक बड़ा हॉट एरिया है, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से होंगे, दे मे बी वेल एक्वेंटेड विद दिस। और एक है गेम ऑफ प्रॉन्ग क्रिएटेड बाय अटारी वर्सेस मैग्नोवॉक्स, राइट? ये 1970s का है, ठीक है, wherein she has been accused of plagiarism of Magnavox, right? So this is all about you can say the international scenario। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो थिंग्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, यहाँ भी हम बहुत कुछ चेंज नहीं पाएंगे। फिर से एक डिस्क्लेमर मेरा कि भाई यहाँ पे जो भी नाम आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये लोग रियली अक्यूज थे या नहीं थे, वो कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि भाई ये टॉपिक को इम्पोर्टेंस क्यों मिला पिछले कुछ वर्षों में, राइट? तो हमने 5 केसेस अगर आप देखें तो ये नेशनल लेवल का सिनेरियो है, जहाँ पे आपने शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में या कुछ मैगजीन्स में, कि 5 प्लैगराइज आर्टिकल ऑन इंडियन फाउंडेशन वेबसाइट, जिसमें बिग नेम लाइक एमजे अकबर एंड सो ऑन, ओके। देन केमिस्ट्री प्रोफेसर एक्यूज्ड ऑफ प्लैजराइजिंग मोर देन 70 आर्टिकल्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, राइट? श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का इशू था। फिर काव्या विश्वनाथन वाज एक्यूज्ड ऑफ प्लैजरिज्म फॉर हर डेब्यूट नॉवेल। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लेड टू प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। या फिर अगर आप देखें तो गुरुनाथन एंड हिज ग्रुप, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें इसकी डिटेल्स में जाना नहीं है और कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये टॉपिक क्यों इतना हॉट हो गया है इन पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है। तो 2007 से 11 में अगर आप ऑब्जर्व करें, पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री एज ए नेशन, इंडिया एज ए नेशन, तो वी हैव रिपोर्टेड हाईएस्ट प्लैजरिज्म रेट, ओके। और यही वजह थी कि यूजीसी और एआईसीटी को थोड़ा सा इस इशू को सीरियसली लेना पड़ा, ठीक है। और they have come up with certain guidelines and regulation and so on in this regard। और आप और मैं टीचर हैं तो हमें डेफिनेटली उन चीजों से अवगत होना चाहिए, राइट? दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस डेलिब्रेशन, राइट? तो ये एक कंपोनेंट हमने इंटीग्रिटी पे बात की, अब हम थोड़ा इथिक्स पे बात करेंगे। तो इथिक्स पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इथिक्स समझने के लिए हम एक छोटी सी एक केस स्टडी ले रहे हैं यहाँ पे, कि भाई आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे हैं और आपको कुछ पैसे मिलते हैं रास्ते पे पड़े हुए या पेडेस्टेरियन जहां आप घूम रहे हैं, ठीक है ना। यू फाउंड सम मनी लाइंग ऑन दिस। मैं आपके साथ में 4 ऑप्शंस दे रहा हूं यहाँ पे। हियर आई वुड लव टू हैव योर रिस्पॉन्सेज, है ना। इफ यू रिस्पॉन्ड आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन, राइट? And there is nothing right or wrong, let me be very clear, right? You may pick any one of these options। so what you will do, आप क्या करेंगे? whether you will leave it as it is और या आप उसे pick it up and spend it, उसे उठा लेंगे और खर्च करेंगे अपने ऊपर, या फिर pick it up and give it to charity, और चौथा ऑप्शन है do something else। तो क्या लगता है आपको? वन बाय वन आप लोगों में से जो भी बोलना चाहे, not necessarily all should participate, but those who are really wanted to contribute, okay, they may contribute। क्या लगता है आपको? Don't worry, I will not ask for any justification, okay, you may choose any of the options। हमें ये समझना है इथिक्स क्या होते हैं, है ना। इसके अंडरलाइंग थ्योरी भी हम समझेंगे और इथिकल डायलेमा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। मला वाटतं याच्यात काही फारसा डिफिकल्ट नहीं है प्रश्न हा, तो तुम्ही बोलू शकता इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? तो क्या लगता है आपको?
इथिकल डायलेमा के लिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? यस, एनी वन ऑफ यू, वेदर यू विल गो विथ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लेट मी क्लेरिफाई कि भाई यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं इसमें कोई सही या गलत नहीं है, ठीक है ना? तो यू मे पिक एनी वन ऑफ द ऑप्शंस, ओके, देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। आई होप यू पीपल आर विद मी, आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आप मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू, नो मैसेजेस सर, मराठी, ओके, give it to charity. Deepali Shah has said give it to charity. Okay, great. Any other option? Let me check out. Okay, only one response I have got. है ना, मुझे एक ही रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है और Sir, it can be also something else where we समथिंग can, एल्स। yeah. यस यस, ओके, तो खालिद सर का कहना है कैन बी समथिंग एल्स। ओके, बट नोबडी हैज आस्क्ड मी, आप में से किसी ने मुझे ये नहीं पूछा, ये पूछने का कष्ट नहीं किया कि सर ये पैसे हैं तो कितने हैं? सम मनी इज एम्बिग्यूअस, है ना? सम मनी का मतलब क्या है? कुछ पैसे पड़े हैं भाई, कुछ, अब कुछ भी हो सकता है, अमाउंट मे बी एनीथिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 रुपए का नोट है तो आपका आंसर क्या रहेगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 करोड़ रुपए की एक बैग फुल ऑफ 500 रुपीज नोट, 1 करोड़ रुपए की बैग पड़ी है, तो आप क्या करेंगे? वेदर यू विल स्टिल रिमेन विद द सेम आंसर और यू विल चेंज योर आंसर? व्हाट डू यू फील? क्या लगता है आपको? काय वाटते आपल्याला? तुम्ही सांगा मला. हॅलो, सर मराठीत पण बोलू शकता आपण, सर किंवा मॅडम, ठीक आहे? नो रिस्पॉन्स, ओके. I was expecting that you will contribute, but anyway, not an issue, right? So what we are trying to understand here is, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, विषय ऐसा है कि अगर आपका अमाउंट छोटा है तो आप क्या करेंगे, और अगर पैसे 1 करोड़ है तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मेरे ख्याल से प्रोफेसर खालिद ने कहा कि भाई समथिंग एल्स वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं कि आप उसे नियर बाय पुलिस स्टेशन फाइंड आउट करोगे, लोकेट करके वहां पे ले जाके डिपॉजिट कर दोगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर आप उसे चैरिटी के लिए दोगे, ठीक है, या फिर बट नोबडी इज सेइंग कि भाई पिक इट अप एंड स्पेंड इट, है ना? बी के साथ में कोई जाना चाहेगा आप लोगों में से? 100 रुपये है या 1 करोड़ रुपये है? आपको लगता है कि आप बी के साथ जाएंगे, पिक इट अप एंड स्पेंड इट? बिल्कुल सर, कोई भी जाएगा ना बी के साथ, बोल नहीं पा रहे पर जा तो सकते हैं ये बी ऑप्शन के साथ। स्वाति तिवारी मैडम ने मेरे ख्याल से साफ साफ बात कही थी, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि सब जाना चाहते हैं लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा है, ठीक है? ऑन अ लाइटर एंड दिस नोट, वन इज अ फैक्ट सर, कोई इतनी बड़ी अमाउंट छोड़ना तो चाहेगा ही नहीं। 1 करोड़ कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना? ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ सिचुएशन को। देखिए, हमें यहाँ पे इथिकल डायलेमा को समझना है ना? हमें ये समझना है कि भाई आपका इथिकल बिहेवियर जो है वो किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो द एग्जांपल साउंड्स टू बी प्रीटी सिंपल, लेकिन दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग इथिकल डायलेमा। तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैडम ने कहा अभी कि भाई 1000 रुपये, 100 रुपये है या फिर 1 करोड़ है, तो संभावनाएं अलग अलग हैं कि हम दूसरे ऑप्शन के साथ में भी जाएंगे। और मैं अब इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। आप ऐसा प्रिज्यूम करिए कि आपने पिछले कई दिनों से खाना नहीं खाया है, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ड्यू टू सम और दी अदर रीजन आपने पिछले 4 रोज से खाना नहीं खाया। अब आपको 100 रुपए का नोट मिलता है ना? और पोस्ट कोविड सिनेरियो आपको पता है कि अब ये नाउ देयर आर स्ट्रीट शॉप एवरीवेयर, है ना? हर 500 मीटर पे आपको खाने का दुकान तो मिल ही जाएगा, मतलब कोई ना कोई पानी पूरी, भेलपुरी या कोई चाइनीज कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
आपने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, 100 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप क्या करेंगे? 100 रुपये उठा के आप क्या करेंगे? नाउ दिस इज फॉर ऑल वंस अगेन, है ना? तो क्या लगता है आपको, क्या करेंगे? आप भूखे हैं पिछले 4-5 रोज से, है ना? आपने कुछ नहीं खाया है, तो इस पॉसिबिलिटी में आप क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? So here we will go with option B. Yes, there you are. है ना? So as Professor Khalid has pointed out that he will go for B. Nothing will come to his or her mind. Whosoever is there, है ना? आप जब भूख है तो भूख आप पे हावी हो जाती है ना? तो आप भूखे हैं तो आपको ये नहीं ठीक लगेगा कि भाई एथिकली करेक्ट है या नहीं है। आप वो 100 रुपये लेंगे और नियर बाय रेस्टोरेंट में जाके आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी वक्त रहेगा उसके हिसाब से आप आपका शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं इस स्टोरी को। अब ऐसा समझिए कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो रियल ओनर है उसका वो वहाँ पे आता है और वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने देख लिया कि ये बंदे ने पैसे उठा के लेके गया और वहाँ पे वो लंच या डिनर कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब उसने आपको बताया कि सर आप क्या ढूंढ रहे हो, तो आपने कहा कि भाई मेरी यहाँ 100 रुपये की नोट गिर गई थी या 200 रुपये की नोट गिर गई थी, तो मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि सर आपकी नोट जो है वो बंदे ने उठाई है, वो वहाँ पे जाके देखिए नाश्ता करते बैठा है या खाना खाते बैठा है। अब आप उसके पास अप्रोच होते हो और उससे पूछते हो, ठीक है, वो बहुत ऑनेस्ट है। वो बोलता है सर बिल्कुल मैंने आपके 200 रुपये 100 रुपये उठाए, लेकिन और मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये भी सही है, लेकिन मैं सर पिछले 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। तो आप क्या बोलोगे? मेरे 100 रुपये या 200 रुपये वापस दो बोलोगे, या यू विल एक्सेप्ट हिज आंसर एंड यू विल से कि भाई मेरे से ज्यादा आपको उस पैसों की जरूरत है, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज हियर इज, हम क्या समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो इथिकल बिहेवियर है वो केवल एक एक पैरामीटर के आधार पे निर्भर नहीं करता है, वो कई पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट आर ऑल दोज पैरामीटर्स? दोज पैरामीटर्स आर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। इंडिविजुअल मैंने क्यों कहा कि मैंने कहा आपसे कि हर बंदा अलग ऑप्शन ले सकता है और होता है ऐसा, है ना? सेम इसमें से किसी ने ए लिया होगा, किसी ने बी लिया होगा, भले ही आपने मुझे बताया नहीं इधर, लेकिन यू कैन गो विथ इट। सो दैट इज योर इंडिविजुअल, हाउ यू आर ग्रूम्ड अप, है ना? आपके घर में क्या वैल्यू सिस्टम था, है ना? सपोज किसी के घर में उसे बताया गया कि भाई जो पैसा आपका नहीं है वो आपने कभी उठाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आप, ठीक है, बिकॉज इट इज इथिकली नॉट करेक्ट टू टेक समबडी एल्स मनी, है ना? तो इंडिविजुअल इन्वॉल्व, राइट? आपका ग्रूमिंग कैसे हुआ, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, और ये वैल्यू सिस्टम के लिए आप कोई कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई ये नहीं ज्वाइन करते हो, ठीक है ना? ये आपका जो बचपन से जो पेरेंटल घर में जो चीजें सिखाई जाती है, दैट इज द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। सेकंड इज द सर्कमस्टांसेस, यानी जिसे हम बोलेंगे हालात, है ना? जो हालात, कई बार आपने ये थीम पे कई हिंदी मूवी आपने देखी होगी, है ना? बॉलीवुड की जो ब्लॉकबस्टर्स मूवी हुआ करती थी 90s की, आई वेरी वेल रिमेम्बर, है ना? पर्टिकुलरली अमिताभ बच्चन की, वो यही थीम था कि भाई बाय बर्थ कोई क्रिमिनल नहीं होता है, हालात उसको क्रिमिनल बना देते हैं, राइट? और द सोसाइटी कंपेल देम टू कमिट you can say crimes and so on. So nobody is by birth criminal, right? The circumstances compel you to commit crimes. Moral intensity. अब देखिए मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, अब हम इथिक्स को डिफाइन कर रहे हैं मॉरल्स में। तो व्हाट डू यू फील, वेदर इथिक्स एंड मॉरल्स आर सेम? क्या लगता है आपको? इस प्रश्न पे आएंगे हम, आप थोड़ा सा सोचिए। देखिए मेरा मेरा जो डिलीवरी है ये खासतौर से मोनोलॉग की बजाय डायलॉग है। ऑब्जेक्टिव यही है कि आप थोड़े से मुझसे जुड़े रहें और थोड़ा सा इंटरेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? हम इस प्रश्न पे बाद में आएंगे, ठीक है? हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर आप इथिक्स और मॉरल्स की अगर थ्योरी देखें तो देयर आर टू अंडरलाइंग थ्योरी ऑन बेस्ड ऑन विच दीज थिंग्स हैव बीन डिराइव्ड, राइट? लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा, तो आप लोगों में से कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि इथिक्स और मॉरल एक ही है, वेदर दे आर सेम और दे आर डिफरेंट, इफ दे आर डिफरेंट हाउ दे आर डिफरेंट? कोई बोलना चाहेगा इस विषय पे? आपको क्या लगता है? इथिक्स को डिफाइन कर रहे हैं मॉरल्स की टर्मिनोलॉजी में, तो वेदर इथिक्स एंड मॉरल्स आर सेम और दे आर डिफरेंट? रिलेटेड है सर, बट दे आर डिफरेंट। दे आर डिफरेंट। सो हाउ दे आर डिफरेंट? रिलेटेड तो है,
आप उसके बीच में स्लैश लगा सकते हैं क्या, और बोल सकते हैं कि इथिक्स और मॉरल, है ना, इंटरचेंजेबली वेदर यू कैन यूज इट, है ना, इथिक्स की जगह मॉरल, मॉरल की जगह इथिक्स यूज कर सकते हैं आप. द आंसर इज अ नो. Okay, there is a thin demarcation line between these two, है ना, even though they sound equivalent term, है ना, आपको लगता है कि भाई ये एकदम equivalent terms हैं, लेकिन they are different. कि कैसे different है, हम थोड़ा सा इसमें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं. तो what are ethics? Ethics are formal set of standard and principles, है ना, and how they are, you can say, designed or derived. They are derived through deliberation and consensus, जिसको हम बोलते हैं knowing philosophy. मतलब जैसे यूजीसी को एक रेगुलेशन निकालना है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी विषय पे एक आधा परिपत्रक निकालना है, कोई नोटिफिकेशन, कोई डायरेक्शन निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि भाई एक ड्राफ्ट कॉपी उसकी वेबसाइट पे डाल देते हैं, फिर बाद में पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1 पेज का एडवर्टीजमेंट देती है कि भाई द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज दिस पर्टिकुलर लॉ और कंडीशन व्हाटएवर, है ना, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उसमें कोई भी हो सकता है, स्टेक होल्डर कैन बी एनीबडी, है ना, मेरा उससे सपोज कोई कॉमर्स रिलेटेड चीज है, मेरा कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है टैरिफ का, राइट, टैरिफ वॉर, इससे मेरा कोई लेना देना, आई एम एन एकेडमिशियन, लेकिन मैं उसमें सजेशन दे सकता हूँ. तो सोसाइटी में जो भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशंस मंगाए जाते हैं, और उसके बाद में जो empowered कमेटी है, दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ considering all the aspects, all the suggestion, in taking into account all the suggestions, और फिर बाद में फाइनल रेगुलेशन निकलता है. तो ये डेलिब्रेशन एंड कॉन्सेंसस. तो इथिक्स जो होते हैं आपके, दे आर लर्न थ्रू डेलिब्रेशन एंड कॉन्सेंसस, राइट, जिसमें डेलिब्रेशन होगा, कॉन्सेंसस हो गए, उसी के बाद बनेंगे, और इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. ठीक है, ये एक बड़ा विषय है. यू मे कॉल इट एज अ कस्टमाइज्ड मॉरलिटी, एंड इट इज फॉर द सिस्टम. इट इज फॉर द सिस्टम मतलब it is for everyone in the society, it is for the masses, okay, it is not for an individual. ठीक है, so it is a broader context. जैसे बिजनेस के आपके इथिक्स होते हैं, आप कुछ बिजनेसमैन के पास जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं सर, मेरे इसमें आप मुझसे चाय पी के जाइए, लेकिन प्राइस आई विल नॉट चेंज, 5 पैसे भी नहीं कम होंगे आपके, जो लिखा है वो मिला आपको देना है, ठीक है ना. So that is my business ethics, okay, there I will not compromise. You may have tea or coffee, or I will offer you even lunch. Okay, that is not a big deal for me, but as far as the price is concerned, you have to pay the entire amount. ठीक है ना. तो बिजनेस इथिक्स हो गया. पब्लिकेशन इथिक्स हम जिस पे बात करेंगे डिटेल में. सो बेस्ड ऑन ethics, human thoughts, motives, action and behaviors are judged right or wrong, है ना. अब ये जो ethical aspects हैं, it is for the masses, it is not for the individual. On the contrary, morals are for individual. It is your own subjective right or wrong, है ना. आपका right और wrong कुछ हो सकता है, मेरा right और wrong कुछ हो सकता है. So morals are for individuals, not for the masses or not for the systems. They are learned from parents. ठीक है, जो आपका अपब्रिंगिंग होता है, आप जो घर में रहते हैं वहां का जो वैल्यू सिस्टम है, वहां से आप लर्न करते हैं. इसके लिए कोई फॉर्मल आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे थोड़े सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं. इथिक्स में सेंटिमेंट्स नहीं रहेंगे. ठीक है, वहां पे रूल है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो या आप ऑर्डिनरी सिटीजन हो, ये सेम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना. यूजीसी रेगुलेशन 2019 फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी, राइट, मिनिमम स्टैंडर्ड, इट इज एप्लीकेबल इक्वली टू एवरीवन इन द एंटायर नेशन, है ना. तो that is minimum standard, है ना. The universities have every right to go little bit more on some dimension, लेकिन उससे नीचे नहीं कर सकते हम. Sentiments are involved and it is for individual है, जैसे मैंने कहा, it is your personal compass, okay, it is your personal compass, है ना. तो ये हमारा एक खुद का एक इंडिविजुअल तक सीमित है morals. तो this way the ethics and morals are different. अब हमें ये देखना है कि इसकी अंडरलाइंग थ्योरी क्या है ना, how these things have been derived, right. So there are basically 2 broad theories, okay, based on these things are basically dependent, है ना. तो पहली theory है जिसे कहा जाता है theory of absolutism. Absolutism की theory क्या बोलती है? One set of moral rules common to all. ठीक है, rules unlikely to change,
एक बार आपने नियम बना दिए वो वैसे ही रहेंगे, है ना, जब तक आप जिंदा है वैसे ही चलते रहेंगे, इट विल नॉट चेंज. ओके, if you are following, if you are a believer of absolutism theory, you are a dogmatic person. Okay, और ये कहाँ पे शक्य है? जहां पे एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट होता है. ठीक है. दूसरी तरफ अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे, तो इथे काय आहे? इथे आहे मेनी एक्सेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स. इट इज नॉट वन सिंपल रूल, राइट? मेनी. ओके, जैसे आपने यूजीसी का भी आपने देखा होगा, है ना, हर 3 महीने में एक नया रेगुलेशन आता था कि भाई पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू पीजी व्हाट हैज हैपेंड, है ना. 2009 में निकाला, 16 में निकाला, फिर निकाला कि भाई आपके क्या बोलना चाहिए कि एक यूजीसी केयर लिस्ट निकाली. यूजीसी केयर लिस्ट को स्क्रैप कर दिया हमने. अभी क्यों किया? इसलिए किया कि हमारे समझ में आ गया कि भाई एवरीथिंग इज बीइंग मैनिपुलेटेड. हमने केयर लिस्ट निकाली, पता चला उसमें जर्नल्स ऐसे ऐड हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया जर्नल ऐड हो रहा है, हर दूसरे दिन उसमें से हमको डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे भी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर इशू में कितने आर्टिकल्स होने चाहिए? 100, 200, 300, 500. पता चला 10,000 आर्टिकल पब्लिश कर दिए बंदे ने. ठीक है ना, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, तो पता चला कि ये स्कोपस इंडेक्सिंग भी कोई काम की नहीं है. ठीक है ना. तो आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सम फाइनेंस इज इन्वॉल्व विद दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. सो रूल्स कैन चेंज ओवर टाइम. और अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं रिलेटिविज्म की थ्योरी में, तो यू आर ए प्रैग्मेटिक पर्सन. प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल. आपकी अप्रोच क्या रहेंगी? प्रैक्टिकल रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो रिलेटिविज्म थ्योरी सेज दैट there is no absolute truth which exists. ठीक है ना. So those we are all, most of us, we are all, if I am not wrong, we are all pragmatic. Okay, we would love to call ourselves as a pragmatic person. Okay, but what is wrong with dogmatism or a dogmatic personality? क्या होता है? आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप में से कोई dogmatic है? Or have you ever worked under a leader who was some way or the other a dogmatic person? आपने कुछ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर देखे होंगे, मोस्ट ऑफ देम, ओके, दे आर डॉगमेटिक, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट दे आर ऑलवेज राइट, राइट, बिकॉज यू एक्सेप्ट दैट फेलो एज योर लीडर, यू नो. सो डॉगमेटिज्म इज लिटिल बिट डिफरेंट. डॉगमेटिक पर्सन इज समवन जिसको, जैसे अभी आप शाम के 4 बज रहे हैं और एक आधा डॉगमेटिक पर्सन से आप बोल रहे हो, तो वो बोलता है कि सर अभी रात के 12 बज रहे हैं, और वो 12 प्रूव करके देगा आपको. ठीक है. तो ऐसे बंदे से आपका बहस करना फजूल है ना. इससे बेहतर है कि आप उससे बात उस विषय पे बात ना करें. यू एक्सेप्ट इट कि सर ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, बाहर एकदम अंधेरा है, डार्क. ठीक है, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि क्योंकि I have seen, rather I have worked with many administrators, okay, those who were having this philosophy, है ना, जिनको हम बहुत एक एरा था बीच में जहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि भाई स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोले तो उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, फिर वो सही हो या गलत हो. ओके, तो एब्सोल्यूटिज्म थ्योरी, सो नोबडी फ्रॉम अस, आई डोंट थिंक आप या मुझ में से कोई अपने आप को डॉगमेटिक कहना चाहेगा. लेकिन आई विल टेल यू वन एरिया वेयर इन वी आर ऑल डॉगमेटिक. क्या आप बता सकेंगे कौन से, कहां पर हम डॉगमेटिक है? आप में सभी सब डॉगमेटिक है. कौन सी चीजों में हम डॉगमेटिक है? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा विषय जटिल है. जटिल इसलिए है कि थोड़ा सा वी आर ऑल डॉगमेटिक. कहाँ लगता है आपको? कुछ लोग कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इसमें? हेलो, आई होप you are with me. What do you feel? There are some areas wherein we are all dogmatic, and that area is, कोई बोलना चाहेगा? Okay, not an issue, right? हम dogmatic कहाँ है? When it comes to your religious belief, there you will never ever question, okay, whether it is right or wrong, है ना. तो वहां हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं देखते हैं. वट एवर रिलीजन यू बिलीव इन, है ना, वेदर you believe in Hinduism or you believe in Christianity or you believe in Islam, right? We are all dogmatic. We will never ever question, because our firm belief is
That is the absolute truth exists in that case. Okay, and that's why we behave in that manner. But for rest of the worldly things, we are all pragmatic. Okay, we are all pragmatic. I hope this is enough as far as the underlying theory of this ethics are concerned. Right? आगे बढ़ते हैं. अब हम जो पब्लिकेशन इथिक्स पे बात करेंगे तो वहां हम कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करते हैं? व्हाई डू वी मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस और व्हाई डू इथिकल इश्यूज अराइज इन पब्लिकेशन, पर्टिकुलरली पब्लिकेशन में क्यों आते हैं? तो देयर हैज टू बी सम रीजन, और इसका ऑब्वियस रीजन जैसे आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे कि इट इज लिंक्ड विद योर सीनियरिटी इन प्रमोशन, है ना? आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो सिर्फ बी बीटेक और एमई एमटेक और पीएचडी की डिग्री से चलेगा क्या? नो, दैट इज नॉट इनफ. यू हैव टू हैव क्वालिटी पब्लिकेशन, राइट? नंबर ऑफ पीएचडी सुपरवाइज्ड. ओके, सो इट इज लिंक्ड विथ योर सीनियरिटी एंड प्रमोशन. इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है, राइट? नाउ if you look at the commercial aspect, it is the publisher's profit, which is the company's profit in turn, right? So for publishing houses, it is a commercial activity, right? Their bread and butter is linked with the profit, okay? And that's why many times they create some ethical issues, okay, when it comes to publication, quality publication in particular. तो ethical issue arise होने के ये reasons हैं, right? अब हम आते हैं कि एकेडमिक इंटीग्रिटी, है ना? हमने इंटीग्रिटी पे बात की, इथिक्स पे बात की, मॉरल्स पे बात की, बहुत जनरल हमने बात कर ली, सारे विषयों पे एक जनरल फ्रेमवर्क बात कर लिया. अब हमें देखना है कि एज ए टीचर और एज ए एकेडमिशियन, है ना, यूजीसी क्या बोलती है एकेडमिक इंटीग्रिटी पर. तो ये स्लाइड आप जो देख पा रहे हैं, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी यूजीसी न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन नंबर so and so dated 23rd July 2018, wherein UGC has categorically defined academic integrity. कैसे define करते हैं देखिए थोड़ा सा UGC ने क्या कहा इस बारे में. Academic integrity is the intellectual honesty in proposing, performing and reporting any activity which leads to creation of intellectual property. Now intellectual property is an umbrella term, है ना? अब हमें समझना होगा, हमने बात की थी इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी तो है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट दी ऑनेस्टी. ओके, इन डूइंग व्हाट? इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग. तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी या एकेडमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, और यू आर राइटिंग फॉर पेटेंट, और यू आर राइटिंग फॉर ए डिजाइन पेटेंट, या आप कोई कॉपीराइट के लिए लिख रहे हो, ठीक है ना? तो जो भी आप intellectual property create कर रहे हो, intellectual property is, as I said, it is an umbrella term which covers all these things, है ना, जो हमने बात की अभी. तो ये सब करते वक्त में आपने honest रहना चाहिए, है ना? It is the honesty which is important, right? In proposing, performing and reporting, right? That is what the UGC's clarification with regard to academic integrity. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, right? Why do we compromise integrity? जैसे अपन ने बात की कि भाई इथिकल इश्यूज क्यों अराइज होते हैं, तो why do we compromise integrity? We compromise integrity. These are the reasons. Okay, these are some key reasons why do we compromise integrity. The very first reason is either publish or perish, है ना? ये एक बड़ा टैगलाइन बोलिए या जो भी आप बोलना चाहें इसे, either you publish or perish, right? Linked with promotion, selections, appointment. आपको प्रोफेसर बनना है, आपको वाइस चांसलर बनना है, तो क्राइटेरिया क्या है? 10 years एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर प्लस सम पब्लिकेशन, सम मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड, राइट? सो इट इज लिंक्ड विथ योर प्रमोशन, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट. Okay, not only with promotion but even selection. Let's say if you want to get selected as a professor, so merely having PhD is not enough, or spending some 10 to 12 years experience is not enough. You have to have some quality publication. If it is not, you are not eligible. I'm not saying that, see, you are not eligible. Okay, it is the essential criteria for becoming professor. Okay, mandatory. Okay, then fame. Okay, those who are from arts and humanities, they will appreciate for becoming famous. Okay, we compromise on this integrity front. Certain countries, जैसे China में, there are monetary rewards associated with this.
है ना. Monetary rewards मतलब government give you some seed money for publication in quality journals. Okay, and that is why there are always a lot of Chinese. Okay, particularly in engineering and technology, right? You'll find a lot of Chinese people over there, right? That is the reason. Okay, it is linked with their bread and butter. Okay, that is why it is so, right? Now, what are the various compromises we make? है ना, जब हम आप और हम रिसर्च करते हैं तो हम कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसमें हमें देखना होगा. तो पहला है डुप्लीकेट पब्लिकेशन मतलब रीपब्लिशिंग द सेम फाइंडिंग अगेन एंड अगेन. आपके और मेरे पीछे NAC है, NBA है, राइट, LEC कमिटीज है, देन देयर आर सो मेनी कमिटीज, इंटरनल ऑडिट है, एकेडमिक ऑडिट है, एंड व्हाट नॉट, राइट. सो वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ आइडियाज. हमारे पास आइडिया की कमी रहती है. अब हमको टारगेट दिया है ना, कि भाई आपको 3 पेपर चाहिए हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में, साल में 6 पेपर चाहिए, स्कोपस इंडेक्स चाहिए. ठीक है, अब आप क्या करोगे? आइडिया तो एक है, पेपर बनाने हैं 3, राइट. पहले पेपर में आप लिटरेचर सर्वे करोगे, सेकंड पेपर में आप थेमेटिक आइडिया पे बात करोगे, और थर्ड पेपर में आप रिजल्ट रिपोर्ट करोगे. लेकिन अगर आप ये तीनों पेपर लेके साथ में पढ़े, तो यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट द आइडिया रिमेन सेम. तीनों में एक ही आइडिया मिलेगा, है ना. जो थीम है पेपर का वो एक ही मिलना है, लेकिन हमको 3 नंबर चाहिए. इसलिए हमने क्या किया, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज सलामी स्लाइसिंग, डिवाइडिंग वन रिसर्च पेपर इनटू मेनी लिटिल पेपर्स, है ना. अब हम इसको नए नए नाम देते हैं. हम एक पेपर को बोलते हैं शॉर्ट पेपर, किसी पेपर को बोलते हैं कंसेप्ट पेपर, किसी को बोलते हैं फुल लेंथ पेपर, किसी को बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल, राइट, किसी को बोलते हैं रिसर्च रिव्यू एंड व्हाट नॉट, राइट. लेकिन अगर आप इनको साथ में लेके पढ़े, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट द आइडिया रिमेन्स सेम, राइट. और सबमिटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट टू 2 और मोर जर्नल्स एट वंस. मतलब हमने क्या किया, एक पेपर लिखा और उसको 2-3 जर्नल में भेज दिया अलग अलग. ठीक है, हमें पता है भैया ऑनलाइन पब्लिश नहीं होता है, ऑफलाइन हो रहा है, हार्ड कॉपी आके पड़ी है अपने पास. ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन में कंसिडर होगा. तो ये एक तरह का मैं क्राइम वर्ड यूज करना बराबर नहीं है, लेकिन ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, राइट. सो डुप्लीकेट पब्लिकेशन इज अगेन कंसिडर्ड एज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंटीग्रिटी फ्रंट, राइट. ऑथरशिप. अब ऑथर के बारे में हमारा बड़ा कई बार बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं कि भाई किसी को भी हम ऑथर बना सकते हैं. देयर इज नो फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग एन ऑथर, है ना. लेकिन सॉरी, तो ऑथरशिप के लिए एक क्राइटेरिया होता है, राइट. हु यू विल कॉल एज एन ऑथर, है ना. तो ऑथर इंक्लूड्स अ स्टूडेंट और ए फैकल्टी और ए रिसर्चर और स्टाफ ऑफ हायर एजुकेशन और HEIs who claims to be the creator of the work under consideration. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UGC बोल रही है. ऑथर किसने होना चाहिए, वो नॉट नेसेसरली आपका टीचर या स्टूडेंट, ये तो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है. लेकिन ही और शी मे बी योर इवन स्टाफ, लेबोरेटरी असिस्टेंट, अगर वो कुछ एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके काम में, है ना, कोई एक्सपेरिमेंटेशन कैरी आउट करने में, या किसी तरह से ही और शी इज कंट्रीब्यूटिंग सम वे और द अदर, यू मे कंसिडर दैट पर्टिकुलर फेलो एज एन ऑथर, सब्जेक्ट टू ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या बोलता है? पहला कंडीशन है कि he or she must substantially contribute to the conception and design of the paper, है ना. मैं किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, है ना. ना मैं आइडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ना राइटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट since I enjoy a position in my organization, I am the principal or I am the director or I am the honorable vice chancellor of a university, right? Just because of that position, my name has been included as an author. ये आपको क्या लगता है, सही है? सही नहीं है, गलत है. ये ऑथरशिप का क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता है, राइट. तो ये एकदम बहुत खतरनाक चीज है, ये होना नहीं चाहिए. सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन क्लेम टू बी एन ऑथर. दूसरी चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्राफ्टिंग आर्टिकल और रिवाइजिंग इट क्रिटिकली फॉर इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द वर्जन ऑफ द पेपर टू बी पब्लिश्ड. ठीक है ना. तो इस फॉर्म में भी मैं अगर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसी किसी का क्रिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी रहती है, ड्राफ्टिंग अच्छा रहता है, तो देन आई मे क्लेम माई सेल्फ टू बी एन ऑथर.
और इसमें आपको एक चीज समझना और जरूरी है. लेट्स से इफ यू क्लेम टू बी एन ऑथर, right? So whatever credits you are getting, okay, it will be equal for all the authors, whether the number of authors are 2 or 6 or 10, okay, all of them, they will enjoy the same credit. Agar kuch gadbad hoti hai, if something goes wrong, right, then the penalty is again same. Okay, that's why you must be very cautious, right, while claiming yourself to be an author. इसलिए कभी भी कोई क्वालिटी जर्नल में आप पेपर भेजते हैं तो क्या होता है, दे फायर यू एन ईमेल. वो आपके मेल आईडी पे एक मेल भेजते हैं कि भाई Mr. So and so has submitted an article entitled so and so. You have been listed as a co-author. If it is not, please, okay, revert us. Okay. अगर आप उस पर खामोश बैठते हैं तो मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आप वो पेपर के ऑथर हैं, और अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? सो ऑथरशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट? ऑथरशिप में फिर सेकंड होता है ऑथरशिप ऑर्डर, किसका नाम पहले होना चाहिए, किसका दूसरा, किसका तीसरा एंड चौथा, राइट? सो डिस्कस द ऑर्डर ऑफ ऑथरशिप एट द बिगिनिंग. ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा. मोस्ट ऑफ द जर्नल्स, रेपुटेड जर्नल्स, दे do not intervene, rather they do not entertain any application in this regard. पता चला आपने इनिशियल सबमिट करते वक्त में आपका नाम तीसरी पोजीशन पे था और आपको लगा कि भाई ये पेपर अब एक्सेप्ट हो गया, नाउ यू वांट टू पुट योर नेम as number 1 and somebody else number as number 3, okay, it will not be acceptable by most of the reputed publication houses, right? So all authors take the responsibility for the content in the manuscript. ये शायद मैं इस विषय पे आपको बोल चुका हूँ कि आपका नंबर छठा है तो आपको 1/6 पेनल्टी होगी, ऐसा नहीं है. जैसे आपको क्रेडिट सेम मिलती है उसी तरह से इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ओके, यू हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट विल बी इक्वल फॉर ऑल द ऑथर्स, है ना? किसी एक के लिए एक और किसी एक के लिए 10%, ऐसा नहीं रहेगा. डिस्क्लोज इफ एनी थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन दी राइटिंग, ओके, और प्रोफेशनल राइटर्स और कंसल्टिंग फर्म्स, ठीक है ना? तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किया है, लिया है, ले सकते हो आप, है ना? फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग के लिए लिया या इंग्लिश ग्रामर चेकिंग के लिए लिया, तो यू मे डू सो, लेकिन उसे आपको पहले एक्नॉलेज करना होगा. जब आप सबमिशन करते हो उसी में आपको समवेयर यू हैव टू मेंशन इट दैट दिस इज फॉर दिस सो एंड सो पर्पस, ओके, द सर्विसेज ऑफ सो XYZ कंपनी हैव बीन टेकन, राइट? समथिंग लाइक दैट. तो ये हो गया ऑथरशिप के बारे में. साइंटिफिक मिसकंडक्ट, है ना? यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ चीजों को समझेंगे. तो साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन इज फैब्रिकेशन एंड सेकंड इज द falsification. Fabrication is basically making up data. Many times I used to call it as cooking up the data or result and reporting them. तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ ABC आ रहे हैं, हमने क्या किया, 2-3 पेपर के रिजल्ट मिला के हमारा एक तीसरा पेपर बनाया और उसमें बोल दिया कि भाई ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है? So making, producing which is not there in existence, okay, that is fabrication. You are fabricating the facts. Falsification is manipulating research material. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे इक्विपमेंट को इस तरह से कैलिब्रेट कर रहा हूँ, है ना, ताकि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए. That is falsification, है ना? तो ये भी आप गड़बड़ी कर रहे हो. तो दिस कम्स अंडर साइंटिफिक मिसकंडक्ट, ठीक है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है ये. देयर आर फ्यू मोर थिंग्स, दैट इज प्लेजरिज्म, जो कि बहुत कॉमन है और यूजीसी ने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई दे हैव कम अप विद डिफरेंट गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड. तो प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म बोलिए या प्लेजरिज्म बोलते हैं हम लोग, राइट? व्हाट इज इट? इट इज व्हेन समबडी प्रेजेंट्स वर्क्स ऑफ अनदर पर्सनस आइडिया, प्रोसेस, result or words as if they were his oblique her own without proper acknowledgement. तो हमने क्या किया, कहीं से आइडिया या कोई मटेरियल एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है? या आइडिया चुरा लिया कहीं से, है ना? थेफ्ट, इट इज अ थेफ्ट बेसिकली, राइट? और यू आर स्टीलिंग समबडीज आइडिया. और ए प्रोसेस, है ना, कोई प्रोसेस है, कोई पर्टिकुलर वे में उसने वो काम किया है, उसको आपने, ठीक है, चुरा लिया. या रिजल्ट्स, ओके. So based on this, there are 4 basic types of plagiarism. From the definition itself, you can derive. कौन सी 4 types है? एक है पहली, जिसे कहते हैं ideas. Okay, 4 distinct types. Wherein you are stealing somebody's idea, है ना? आपने किसी और का idea चुरा है, भले ही आपने उसे आपके अल्फाज में लिखा, जिसे हम paraphrasing कहते हैं, like, लेकिन idea किसी और का था, ठीक है? Sources. Sources में हम क्या कर रहे हैं?
कि आपने पेपर लिखते वक्त में कोई एबीसी सोर्स रेफर किए और रेफरेंस सेक्शन में आपने क्या किया कि कुछ XYZ सोर्सेस बता दिए, यानी यू आर मिसलीडिंग द रीडर। आप ले कहीं से ले रहे हैं और एक्नॉलेज किसी और को कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि छुपाना है आपको, है ना, वॉट एवर रॉन्ग डूइंग यू आर डूइंग, है ना, उसको कहीं कहीं ना कहीं आपको छुपाना है। तो ये सोर्सेस हो गया। ऑथरशिप, ऑथरशिप पे मेरे ख्याल से हमने विस्तार से बात की है कि विदाउट fulfilling the criteria of authorship, you want to claim yourself as an author, जिसकी मैंने शायद बहुत डिटेल में आपसे बात की कि क्राइटेरिया ऑफ ऑथरशिप क्या है। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ some parameters, right? But if you are not contributing in any aspect and still you are claiming to be an author, that is highly dangerous. And just because of your position or your, you can say the stature you are enjoying in an organization, okay, you are claiming to be an author, that is highly dangerous. और वर्ड वाला जिसे बहुत कॉमन कहा जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट, ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट, दैट इज द वर्ब, सॉरी, वर्बटिम और वर्ड फॉर वर्ड एज इट इज पैरा उठाया और हमने पेस्ट कर दिया, ओके, विच इज हाईली डेंजरस। सो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ये 4 प्रकार का प्लेजरिज्म होता है, राइट। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसको यूजीसी ने काफी विस्तार से एक सेपरेट नोटिफिकेशन से नोटिफाई किया है, जिसे कहा जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म, व्हाट इज इट? It is a type of plagiarism in which the writer republishes a works in its entirety or reuses portion of previously written text while authoring a new work, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने थेसिस सबमिशन के पहले 4 या 5 पेपर पब्लिश कर दिए। अब जब आप थेसिस लिख रहे हो तो नेचुरली आपके जो 5 पेपर है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो पब्लिक डोमेन है, उसको आप यूज करके थेसिस लिखोगे, ठीक है ना। और पता चला कि आपने वो रेफरेंस सेक्शन में आपके खुद के पेपर नहीं डाले हैं, लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो ही और शी विल फाइंड, है ना, उसको नेट पे सब मिल जाएगा कि भाई ये तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इन्हीं के नाम से है, भले ही आपके खुद के पेपर है, किसी और के नहीं है, यू आर द ऑथर, but still it will be considered as plagiarism. That's why it is called as a self plagiarism. Okay, so actually इसका bottom line ये है कि एक चीज के लिए आपको एक ही बार क्रेडिट मिलनी चाहिए, है ना, बार बार आप उसके लिए क्रेडिट नहीं ले सकते हो। जैसे आपने पेपर पब्लिश किया तो ऑलरेडी आपको क्रेडिट मिल गया है उसका, अब आप थेसिस में उसे कैसे क्रेडिट लोगे, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। आप वहां से एज इट इज कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हो पेपर में से। रीपब्लिशिंग द सेम पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड एल्सवेयर विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन, और गड़बड़ ये की आपने कि आपका खुद का भी होने के बाद में उसको साइटेशन में डाला नहीं, तो दैट इज हाईली डेंजरस। Publishing same scripted paper from a longer and previous without due and full citation in order to show a larger number of publication, है ना। पेपर काउंट जो मैंने कहा, है ना, वी रश आफ्टर नंबर्स, तो हमें 3 पेपर दिखाने हैं, 5 पेपर दिखाने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, आइडिया वही रखा, उसे ही पब्लिश करते जा रहे हैं। रीयूजिंग डेटा दैट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड in a published work or communicated for publication in another work without due and full citation, है ना। जैसे आपके रिजल्ट्स पेपर में रिपोर्टेड है, वो रिजल्ट एज इट इज आप पेस्ट कर रहे हो थेसिस में, तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। यू नीड टू पैराफ्रेज इट, रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके, देन एंड देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस सेल्फ प्लेजरिज्म। अब यहाँ पे कुछ लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे डिबेटेबल इशू है ये, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये सेल्फ प्लेजरिज्म शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्लेजरिज्म बिकॉज अल्टीमेटली आपका खुद का ही लिखा हुआ पेपर है। लेकिन UGC is very clear about this, right? They categorize it as a self plagiarism, okay, which is again not allowed, okay. Breaking up a larger study into smaller, जिसको हमने Islamic slicing देखा, या paraphrasing one's own previously published work without due and full citation of the original. तो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो it will be considered as self plagiarism, ठीक है, which is again a type of plagiarism, right? इसके अलावा 2 और एस्पेक्ट हैं जिसे कहते हैं अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म और इंटेंशनल प्लेजरिज्म। अनइंटेंशनल क्या होता है? पैराफ्रेजिंग पुअरली। पैराफ्रेजिंग पुअरली मीनिंग देयर बाय चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर बट नॉट द वर्ड्स और चेंजिंग फ्यू वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, है ना, इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। आजकल इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, राइट, बट वन शुड नॉट डू इट, राइट, दिस इज नॉट अलाउड, ओके। देन कोटिंग पुअरली, कोटिंग पुअरली में आपने क्या किया कि डबल कोटेशन मार्क में इफ यू पुट एनीथिंग इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्लेजराइज्ड कंटेंट, ओके।
तो जैसा आपको कोई डेफिनेशन लेनी है तो आप उसे क्या कर सकते हो, एज इट इज ले लो, कॉपी पेस्ट करो, लेकिन उसे डबल कोटेशन मार्क्स में लो और रेफरेंस सेक्शन में दो कि भाई ये जो डेफिनेशन है हमने ये पर्टिकुलर सोर्स से ली है। ओके, तो देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म। लेकिन आपने क्या किया, कोटिंग पुअरली, मीनिंग देयर बाय पहला डबल कोटेशन लगाया और दूसरा कहीं पे पता चला पेपर के एंड में लगा दिया। अब नाउ द एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट विल बी ignored from plagiarism and you will get similarity index as 0. Okay, तो ये डेंजरस है। ठीक है, citing poorly, omitting an occasional citation और citing inaccurately, रेफर कुछ कर रहे हो, बात कुछ और, रेफरेंस सेक्शन में और कुछ बात कर रहे हो, राइट, दैट इज अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। तो ये भी एक प्रकार का प्लेजरिज्म है। इंटेंशनल क्या है, जो बहुत डेंजरस है। अब आपने क्या किया, एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया और क्लेम कर रहे हो ये आपका पेपर है। कॉपीइंग ऑफ वंस ओन प्री रिटन पेपर्स फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये इंटेंशनल प्लेजरिज्म हो जाएगा। कॉपिंग एन ऐसे फ्रॉम द इंटरनेट एज इट इज, ऑथर का नाम बदल दिया। कटिंग एंड पेस्टिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस, यानी 2-3 पेपर में से आपने कुछ तो भी खिचड़ी बनाई और एक पेपर बना दिया, एंड नाउ यू आर क्लेमिंग दैट दिस इज योर ओन पेपर। ओके, दैट इज इंटेंशनल प्लेजरिज्म। ठीक है, तो ये इंटेंशनल में आता है, ये भी खतरनाक है। What is excluded from plagiarism? Okay, being a user or as an academician, we need to know what is not considered as plagiarism, what is excluded. So all quoted work, जैसे मैंने कहा डबल कोटेशन वाले, all references bibliography. That's why whenever you go for a flag check, जो भी आपके लाइब्रेरियन है वो आपको बोलते हैं कि सर ये प्लीज निकाल दीजिए सब यहाँ से, कवर पेजेस निकाल दीजिए, एक्नॉलेजमेंट निकाल दीजिए, ऑल जेनेरिक टर्म लॉज जैसे न्यूटन्स लॉ है या इस प्रकार के जो भी लॉ है, जो भी स्टैंडर्ड लॉज है, स्टैंडर्ड टर्म्स है जैसे पाई है या जो भी स्टैंडर्ड टर्म्स है, कॉमन लैंग्वेज और कोइंसिडेंटल टर्म, लेकिन देयर इज अ लिमिट। व्हाट इज दैट लिमिट? अप टू 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। एक वक्त में आप 14 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स नहीं ले सकते। 14 से ज्यादा लिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म, राइट। 14 से कम है 10, 11, 12, 13 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन लैंग्वेज मीन्स वेल स्टैब्लिश फैक्ट, कोट हो गए इसमें आपके, फिगर्स हो गए और इंफॉर्मेशन that is known to most of the people. So these things are excluded from plagiarism. ठीक है, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप बाद में रेफर कर सकते हो। ठीक है, this is once again the extract from the same regulation 23rd July 2018 probably, wherein the UGC has come up with some penalties. Penalties क्या बताई है इन्होंने डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज किया। अगर आप स्टूडेंट हो, रिसर्च स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल पीएचडी कर रहे हो या एमफिल कर रहे हो या एक मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, तो आपको फ्लैग चेक करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। फ्लैग चेक किया आपने, पता चला आपका सिमिलरिटी इंडेक्स जो है अप टू 10% है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 10 से 40 है तो इसमें पेनाल्टी है, स्टूडेंट को भी पेनाल्टी है। सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ not exceeding 6 months. Okay, level 2 40 to 60, such student shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year. पहले में 10 से 40 में 6 महीने तक, 40 से 60 में 1 साल तक, और level 3 which is highly dangerous, okay, such students registration for that program shall be cancelled forever. He or she will not be allowed to complete that particular course. ठीक है, ये तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या एज ए सुपरवाइजर व्हाट आर द पेनल्टीज? ओके, आई गो लिटिल फास्ट, है ना, मैं थोड़ा सा अपन, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी भी चाहिए। आप लेटर ऑन यू मे गो थ्रू द वेरियस रेगुलेशन इन दिस रिगार्ड। तो अप टू 10% माइनर सिमिलरिटीज, नो पेनल्टी। 10 to 40 शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द स्क्रिप्ट। देखिए फिर भी टीचर के मामले में थोड़ा सा सॉफ्ट है गवर्नमेंट, राइट। 10 to 40 shall be asked to withdraw the script, भाई आप विड्रॉ कर लो, खामोश बैठो। 40 to 60 shall be asked to withdraw the script, shall be denied right to 1 annual increment, shall not be allowed to be a supervisor for a new masters MPhil PhD student for a period of 2 years. 2 साल तक आप कोई भी PhD कैंडिडेट गाइड नहीं कर सकते कुछ, और आपके कितने इंक्रीमेंट, 1 इंक्रीमेंट होल्ड अप हो जाए, राइट, इट विल बी विथहेल्ड, राइट। तो आप ये सारी चीजें किस लिए कर रहे हो, पेपर्स क्यों पब्लिश कर रहे हो? प्रमोशन के लिए। पता चला आपको फाइनेंशियल नुकसान हो गया, राइट। 60% से ज्यादा है, ठीक है। शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ द स्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड 2 annual increment, shall not be allowed to be a supervisor for a period of 3 years, right, for a period of 3 years, right. So this is why we have to take up this issue very seriously. इसीलिए हमें इसे बहुत
यानी संजीदगी से लेना होगा और बहुत सीरियसली इसे समझना होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आखिर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर थोड़ा सा हिंदी और मराठी में बात करूं, राइट। तो हम थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो आई डोंट नो वेदर यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू दैट, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें समझना होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि मैं आई एम एंजॉयिंग टू पोजीशन, मैं ऑथर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, और पता चला मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मेरे अंडर पीएचडी किया है, वो कोई पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो बंदे से, जो स्टूडेंट से, हु इज वर्किंग एज ए मैनेजिंग एडिटर ऑफ XYZ पब्लिशिंग हाउस, उसके साथ मैंने ये किया कि भाई मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं एक पेपर भेज रहा हूँ, पेपर थोड़ा सा लो क्वालिटी है लेकिन मेरा प्रमोशन ड्यू है, किसी भी तरह से भाई इसको मैनेज करके पब्लिश करवा दो। तो आई एम यूजिंग माई पर्सनल रिलेशनशिप, ओके, आई एम एक्सप्लॉइटिंग दैट रिलेशनशिप। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसको अवॉइड करने के लिए क्या करती है जो फेमस पब्लिशिंग हाउसेस हैं, दे while submitting your paper they ask you to submit a form जिसको कहते हैं COI disclosure form, conflict of interest disclosure form। अभी डिस्क्लोजर फॉर्म में क्या होता है? डिस्क्लोजर फॉर्म में आपको अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? मैं अपनी पोजीशन फिर से, या मेरे जो रिलेशंस है, अब ये पोजीशन मैंने तो टीचर स्टूडेंट की बताई है आपको, है ना। पता चला कोई मेरा रिलेटिव है, पता चला कोई सेम पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ या जिसका मैं मेंबर हूँ, राइट, या सेम रिलीजन का है, वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। तो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म आपको दिया जाता है पब्लिकेशन के पहले, और उसमें आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसे बोलते हैं COI डिस्क्लोजर फॉर्म, राइट। इसमें क्या क्या रहता है? फाइनेंशियल टाइज है आपकी, एकेडमिक कमिटमेंट है, पर्सनल रिलेशनशिप है जो मैंने कहा टीचर स्टूडेंट की, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ है, या इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन है ना, इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन, राइट। तो ये सारे विषयों पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका एक्सपेक्टेड ये है कि उसका आपने सही उत्तर देना चाहिए, सही आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या रहते हैं? व्हाट इज टू बी डिक्लेयर्ड, व्हेन एंड टू होम, ठीक है। फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशन एक प्री डिफाइंड फॉर्म होता है, जैसे आपके कॉपीराइट फॉर्म होता है वैसे रहता है। और इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दे विल आस्क यू समथिंग लाइक कि भाई आपका कोई नियर क्लोज रिलेटिव या स्टूडेंट इस पब्लिशिंग हाउस के साथ में काम करता है, हाँ या ना। ओके, इफ यू से यस, ओके, दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड यू दी डिटेल, वो बोलेंगे आपको उसका नाम, उसका डेसिग्नेशन सब हमको दीजिए। आपने सबमिट करते वक्त में ये सारी चीजें हाइड की और बाद में किसी ने कंप्लेन की, पता चला कि ये सारी चीजें आपने छुपाई हैं, तो इसके परिणाम बड़े डेंजरस होते हैं, है ना। मेनी टाइम्स यू हैव टू रिट्रैक्ट योर पेपर, एक अपोलॉजी देनी होगी आपको, आपका पेपर रिट्रैक्ट किया जाएगा, वो अपोलॉजी जर्नल के फ्रंट पेज में पब्लिश होगी, एंड व्हाट नॉट, राइट। सो देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज, राइट, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल डील विद दिस इशू वेरी सीरियसली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसको मैनेज कैसे किया जाता है? इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग जितने पब्लिशिंग हाउसेस है, या जितने रिनाउंड पब्लिशिंग हाउसेस है, दे हैव गॉट देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद दिस, है ना। तो उनके खुद के एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना होगा, राइट। तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात हुई। आखिर में मैंने आपसे कहा था कि वी विल टॉक ऑन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ये एरिया में काम कर रही है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर, द वेरी फर्स्ट वन इज कोप। व्हाट इज कोप? इट इज द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ठीक है। सो कोप इज द ओनली होप, राइट। कोप इज द ओनली होप whenever you face or encounter any problem, okay, you need to approach this agency। पता चला आपका किसी का आइडिया था और वो सेम आइडिया मैंने लेके पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब आप तो सफरर हो, ठीक है। आपने क्या किया कि आप अप्रोच हो गए कोप को। कोप में आपने कंप्लेन लॉन्च की। तो कोप की वेबसाइट, कोप जो है बेसिकली कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, इनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। 97 से 2003 में सिर्फ 90 मेंबर्स थे। 6 से 9 में 3000 प्लस मेंबर्स है। राइट नाउ 12,500 प्लस मेंबर्स है, 12,500 प्लस मेंबर्स है। और इनके वेबसाइट पे आप जाओगे publicationethics.org, तो you will find 18 flowcharts dealing with
different issues with regard to publication. तो उस हिसाब से आपको कार्रवाई करनी होती है, मतलब आपको कंप्लेन लॉन्च करनी है तो किसको लॉन्च करनी है, उसका मेल आईडी रहेगा, राइट, एंड देन द कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोप नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। सेकंड, फिर अगर कोप के वेबसाइट पे जाएंगे तो यू फाइंड लॉट ऑफ रिसोर्सेस ओवर देयर, है ना। कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, जैसे इनका टैगलाइन ही है, अगर आप इनका टैगलाइन देखें तो प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी इन स्कॉलरली रिसर्च एंड इट्स पब्लिकेशन, दैट इज देयर टैगलाइन, ठीक है। तो उससे ही पता चलता है आपको ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत से पीडीएफ्स मिलेंगे, जो आप इनके अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत से सोर्सेज मिलेंगे यहाँ पे, जिसका आप यू कैन गो थ्रू एंड देन अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन, ठीक है। एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट कैसे रहेगा, ऑथरशिप किसे कहेंगे, कंट्रीब्यूटरशिप किसे कहेंगे, कंप्लेंट्स एंड अपील्स क्या रहेगी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैंडल होगा, ओके, जर्नल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, पोस्ट पब्लिकेशन डिस्कशन एंड करेक्शन। नॉर्मली हमारा परसेप्शन है कि हमने पेपर पब्लिश कर दिया और खत्म हो गया मामला, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। आपने पब्लिकेशन कर दिया, पता चला कोई बंदे ने वही एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और उसको कुछ दूसरे डिफरेंट रिजल्ट मिलने लगे, तो ही और शी में कम अप एंड आर्ग्यू विद यू कि सर ये तो आपने जो किया वैसे ही हमने एग्जैक्टली किया, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट सेम, सो व्हाटएवर यू आर क्लेमिंग दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रबिश, ओके। तो आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है ना। इसलिए रिट्रैक्टेड पेपर्स भी काफी है आजकल, आप देखें तो ये रिट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया, पेपर पब्लिश हो जाता है बाद में रिट्रैक्ट होता है, तो पोस्ट पब्लिकेशन डिस्कशन एंड करेक्शन, है ना। और अगर आप कन्विंस्ड हो उसके आइडिया से तो आपको रिटर्न अपोलॉजी देनी होगी कि वेल भाई ये मुझसे गलती हो गई थी, ऐसा ऐसा है और यू आर राइट, ओके। So they will publish it on the journal's website and so on. तो इसमें बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप अपने पास में इतना समय नहीं है अभी, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, लेकिन आप ये स्टफ में जाके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं ना। मैंने कुछ यूज केसेस बताई, इनके कुछ इवेंट्स थे अभी हाल फिलहाल में, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वैमे जो एक दूसरी है, आप में से कुछ लोग अगर मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इस एरिया में काम करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, राइट। ये स्पेसिफिकली मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए वैमे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, और इनके भी जैसे कि हमने कोप के देखे हैं उसी पैरेलल लाइन पे इनके भी कोड ऑफ कंडक्ट है ना, और रिलेशनशिप है एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर इन देयर इन दिस वैमे, ठीक है। ऑथर्स किसे कहेंगे, ऑथरशिप किसे कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डील किया जाएगा, दैट इज देयर इन दिस वैमे URL है वन सेकेंड, ठीक है। वैमे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो आप देख सकते हो, राइट। So there are very many things under this WAME, right? Then use cases of WAME which you may go through, okay, from their website, okay. Then आती है ICMG, ये बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे only 16 members हैं, लेकिन ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप पब्लिकेशन में देखें तो बहुत ह्यूज है, ओके। व्हाट हैज हैपेंड, ये जो लोग हैं 16 मेंबर्स थे इनिशियली, तो ये 3 या 4 ही थे, उन लोगों ने कुछ पेपर भेजा, आई एम टॉकिंग अबाउट 1978, तो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट, ओके। इट इज कॉल्ड एज एंड they have submitted some paper, it was rejected on some foolish ground, तो they were surprised कि यार पेपर तो सब कुछ ठीक है, तो पता चला उसमें लिखा कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है या इसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट मिसिंग है वगैरह वगैरह, तो 78 की बात कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया और इन्होंने सोचा कि ये प्रोसेस को अपन स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो दे हैव कम अप विद सम, एंड इन्होंने, इनकी पहली मीटिंग्स हुई थी वैंक्यूवर में जो कनाडा में है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वैंक्यूवर स्टाइल एज वेल। तो उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट करके एक URM बनाया और उसमें डिटेल में लिखा गया है कि भाई पेपर में क्या क्या होना चाहिए, पेपर में एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए एंड सो ऑन। तो इसे ICMG कहा जाता है, राइट। 78 में बना, मैंने जो कहा पहले आपको, 79 में इन्होंने फर्स्ट URM निकाला, 97 में कंप्लीट रिवीजन किया, 2007 में लास्ट रिवीजन हुआ इनका, और इट इज अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल दी लार्ज जर्नल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो इसे वैंक्यूअर स्टाइल कहा जाता है जो मैंने कहा, ठीक है। राइट नाउ दे हैव रीनेम्ड दैट वैंक्यूअर स्टाइल टू रिकमेंडेशन फॉर द कंडक्ट, रिपोर्टिंग, एडिटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल इन मेडिकल जर्नल्स, राइट। यहाँ भी आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है।
So this is all as far as I think this session is concerned. Okay. Intentionally I have kept a few minutes for the discussion. Peer review मुझे लगता हम थोड़ा सा complete नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि peer review होता क्या है। तो दो प्रकार के रिव्यू होते हैं। जब आप रेप्यूटेड जर्नल में पेपर भेजते हो तो एक एडिटोरियल रिव्यू होता है। ओके, नॉर्मली एडिटोरियल रिव्यू में व्हाट डू दे सिंपली लुक एट द कंटेंट। ओके, उसकी टेक्निकलिटीज नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ ये पार्ट देखते हैं कि भाई वेदर इट इज विद इन द स्कोप ऑफ द जर्नल और नॉट, है ना। हर जर्नल की एक स्कोप होती है ना, जिसमें वो एक प्रकार के थेमेटिक एरिया के पेपर्स एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स से इफ इट इज विद इन द स्कोप देन इट गोज फॉर डिटेल्ड रिव्यू, है ना। लेकिन एडिटोरियल रिव्यू में whether the idea is it really interesting or is it important, or is the methodology sound, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर मालूम करने की कोशिश की जाती है, जिसे हम एडिटोरियल रिव्यू करते हैं। तो एडिटोरियल रिव्यू वाले लोग आपके नॉर्मली एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, आपके डोमेन एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, है ना। वो ब्रॉड पिक्चर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका रिव्यू होता है, जिसे हम कहते हैं पीयर रिव्यू, ठीक है ना। तो एडिटोरियल रिव्यू में दो तरह के एस्पेक्ट देखे जाते हैं, पहला है लोकल एस्पेक्ट और सेकंड है ग्लोबल एस्पेक्ट, राइट। लेकिन पीयर रिव्यू में काफी चीजें अलग अलग डायमेंशन में देखी जाती है। तो रिव्यू लिखते वक्त में आप सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ए रिव्यूअर, ओके, फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और अब आप वो पेपर का रिव्यू कर रहे हो, तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो हम लिखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर XYZ प्रोग्राम, दिस पैराग्राफ कुड नॉट मेक सेंस। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट फॉलो दिस पैराग्राफ, कैन यू स्टेट योर मेन पॉइंट क्लियरली इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो इवन दो ऑब्जेक्टिव सेम है आपका, आप बंदे से रीराइट करवाना चाहते हैं वो पैराग्राफ, लेकिन पहले पहले रिव्यू ये भी आप लिख सकते हो कि पैराग्राफ कुडंट मेक सेंस, दिस इज अ ब्लंट रिव्यू, है ना। तो ये किसी को हर्ट भी कर सकता है। तो सेम चीज आप थोड़ा सा पोलाइटली इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। सो रिव्यूअर शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग सो, है ना। दैट्स व्हाई आपका पेपर रिजेक्ट भी होता है तो नॉर्मली व्हाट डू, दे अप्रिशिएट योर वर्क and they appreciate कि भाई आपने हमसे contact किया and you have selected our journal, right? However, and then they say कि भाई the paper which you have sent, it is not within the scope of this. We regret to inform you that we will not be in a position to further consider your paper for publication in our journal due to the scope and the application and whatever, right? So whatever may be the reason, right? तो पहले आपको इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो रिव्यू करते हो। सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई आपको एक आधा ग्राफ है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है ना। तो इफ यू आर ए ब्लंट रिव्यूअर, व्हाट यू विल से दैट दिस ग्राफ इज पॉइंटलेस। इसी को आप इसी प्रकार से कह सकते हैं कि आई लाइक द इंफॉर्मेशन बट डोंट अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है ना। तो भाई ये ठीक ठाक तो लग रहा है मुझे, है ना। आई लाइक द जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, जो एलेबोरेट करना चाह रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन इसका पर्पस मेरे समझ में नहीं आया। तो बंदा समझ जाएगा कि भाई मुझे फिर से कुछ तो भी ग्राफ को चेंजेस करके सबमिट करना है, राइट। सो सेकंड ऑप्शन इज द बेटर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट। सो रिव्यूअर must adopt some strategies, right, while reviewing the article. Okay, so there are certain common strategies which is applicable to reviewer. Ask question as an interested reader. मतलब आपको पहले ये दिखाना होगा, दर्शाना होगा कि भाई आप really you have gone through each and every part of your paper and you found it very interesting, so you have to appreciate it in the beginning, and then you may come up with some however kind of a stuff wherein you may say कि आप बोलोगे sir however paper is good but however I personally feel that you must modify on these three dimensions. So focus on global before local aspect. Offer constructive criticism. So even though we are criticizing, दो एग्जांपल हमने ऊपर देखे हैं दोनों तीनों, क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम, लेकिन इट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट क्रिटिसिज्म इज टू इंप्रूव द पेपर. ओके, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू स्कोल्ड दैट फेलो, राइट. उसको फायर नहीं करना है हमें, उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव से करवा के लेना है. सो ऑफर रीजंस फॉर योर पॉजिटिव कमेंट्स. अगर आप कोई पॉजिटिव लिख रहे हो तो उसकी भी आपको जस्टिफिकेशन देना जरूरी है, और आखिर में आपने समरी लिखना जरूरी है, राइट, रिव्यूअर्स में, राइट. तो अब इसमें और आगे हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम,
So I thank you all for the patience hearing. Okay. अब इस विषय में आपके कुछ भी प्रश्न होंगे तो you are free to fire your query, right? है ना, आप पूछ सकते हैं मुझसे. हेलो, आई होप आप मुझसे जुड़े हुए. I hope Thank we you, are sir. connected. Yes. Thank you, sir. Participant, if you have any queries or the question, you can directly ask to Professor Atik, sir. Please, anything. Let me stop sharing. Yes, anyone has any queries or the questions? किसी के कोई questions है? One thing is surprising, your register strength is Gupta madam, only 31 participants are there in the meeting. Yes, sir, sorry. The participant, I think after Okay, the let- session, as per their conveyance, they are listening the It is session. not at all like that. The government is taking up this issue very seriously. और आपका जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है. मैंने कहा हमारे पास में जैसा हमारा ये जो जूम का है इसी में फैसिलिटी है हमें कि इट रिकॉर्ड्स एवरी सेकंड ऑफ योर अटेंडेंस, है ना. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेन प्रेजेंट. Otherwise, then later on don't blame us. We will not be in a position to issue your certificates, right? So this is a serious issue. It is not merely for certification, है ना. एक आपको 8 दिन का पूरा 2 वीक का सर्टिफिकेट मिल रहा है जो आपके कैश में भी काम में आएगा. एंड डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आई टेल यू, इफ यू टेक इट इन दैट वे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है. We are trying our level best to give you the best of the resource person, but at the same time you must be very responsive, right? 5 से 6 लोग, कुछ डायरेक्टर तो ये आएंगे आपके सेशंस में जो आपको ये कहेंगे कि आपके कैमरास ऑन करिए. ठीक है, तो यू हैव टू कंप्लाई. आई एम वेरी सॉरी, है ना. इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट. ठीक है. सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन अ मिशन मोड, right? And we have to take it in that way only. Okay. Even though live streaming and then videos are available on our channel, but that is not the right way of attending this program. Okay. So please inform all your participants that they have to remain present for all the session, right? And timing, everything is being adjusted as per your convenience, right? First 2 days we were having some issues. That's why 11 से 2 रखा. लेकिन अभी 2 से 5 है. मुझे लगता है आपकी सारी एकेडमिक चीजें हो जाती होंगी. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्वाइन करिए इस ट्रेनिंग. ठीक है. Thank you, sir. Thank you. Yeah. If there are any queries, I will be happy to answer. Yes. Sir, I think there are no queries from the participants. Okay. All right. All right. Shall we conclude, sir, if you could Yes. permit? So, on behalf of all the organizers and all the participants, I extend my sincere thanks to Professor Atik, sir, for such a wonderful session towards this academic integrity and research ethics in publication. We are really thankful to you, sir, and your inputs that will be very valuable inputs. It will be really useful in our research purpose. I once again extend my sincere thanks to you for your precious time and thought-provoking session here, sir. And with the kind consent of Professor Atik, sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow. Thank you, one and all. And